सकते हैं कि हम साथ जहाँ भी कोई बिल्डिंग है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाएं, पानी को वेस्ट नहीं होने दें। जैसे सब बताया कि अगर आपका टैप है, अगर उससे एक बूंद भी टपकता है तो 17 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो कोशिश ये करें कि घर के जितने भी टैप आपके हैं वो लीकेज ना हो, उनमें खुला ना छोड़ें। दूसरा, आपका जो ओवर हेड टैंक्स होते हैं उसमें हम देखते हैं बहुत बार पानी ओवरफ्लो होता रहता है, दिन भर बह रहा है, तो उसको हम ऐसा ना होने दें। कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो आप उसको उसको रोकें। तो इस तरह से जो वाटर का मिसयूज़ होता है उसी को हमको चेक करना है। और बहुत ज़्यादा ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि पानी कम हो जाएगा तो क्या है, पानी तो कम होने वाला नहीं है। अर्थ है तो पानी है, जब तक अर्थ रहेगी तो पानी रहेगा। बस जो फ्रेश वाटर है उसको हमको संरक्षित करना है और उसको सहेज के रखना है, और जिसको हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको संरक्षित कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में भी जैसा कि डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि जो रिसोर्स पर्सन है वो माने जाने साइंटिस्ट हैं अपने अपने एरियाज में, वो आपको व्याख्यान देंगे कि हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं। एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का भी हम लोगों ने आज, मैं मंच को वो बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने पार्टिसिपेंट की मदद से अपनी बिल्डिंग के पीछे एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का भी निर्माण करवाया है इसी कार्यक्रम के दौरान, और बच्चों को उसमें ट्रेन भी किया है कि कैसे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएंगे। और इन्हीं में से जो 4-5 बच्चे होंगे जो ट्रेंड होंगे वो आगे इस चीज़ को लीड करेंगे, वो एज ए वॉलंटियर करेंगे अपने आप को, और गांव में या शहर में कस्बों में जाके कैसे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक को बनाया जाए और उसके आगे ये ट्रेनिंग देंगे। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजर है स्किल डेवलपमेंट सेल के डॉक्टर रोहित राजा, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय सिंह, विभागाध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रा, एंड फैकल्टी ऑफ माय डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस प्रोग्राम को पूरे मन से अटेंड कीजिए और जो भी बेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं उसको दीजिए। साथ साथ पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ हैं और कुछ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको जो ये दिन का प्रोग्राम है उससे आप कुछ अच्छा सीखें और जो भी आप सीखें उसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उतरे मोती मानस सोन। पानी की इसी ज़रूरत को, इसी संरक्षण की ज़रूरत को लेकर आज का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं भाजपा विश्वविद्यालय के स्किल डेवलपमेंट सेल के नोडल अफसर डॉक्टर रोहित राजा सर को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूँगा तो अपने विचार रखें। Good morning to one and all. As a nodal officer of Skill Development Cell, I want to welcome our respected Honorable In Charge Vice Chancellor Sir, Professor A. Saxena Sir, our respected Dean, Professor S.C. Tiwari Sir, our respected Head, Professor K.K. Chandra Sir, our Course Coordinator, Dr. Ajay Sir, and School Coordinator, Dr. Atul Bhagwat Sir. उनके हेल्प और उनके गाइडेंस में हमने ये स्किल डेवलपमेंट सेल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और मैं बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट को कि ये विद इन वीक दूसरा इवेंट है। और स्किल डेवलपमेंट सेल हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर और रजिस्ट्रार सर के गाइडेंस में हमने स्किल हब का एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, तो उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा टारगेट हमारे को ही मिला है। बाकी सारे स्कूल्स कॉलेजेस को 200-300 टारगेट मिला है। हमको 6 मंथ में 2300 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए मिनिस्ट्री ने हमको टारगेट दिया है। और
5 रोल्स जॉब रोल हमने आउट ऑफ 700 5 जॉब रोल हमने सेलेक्ट किया था। उसमें से पहला आपका फॉरेस्ट्री का है, बम्बू आर्ट का। तो बिफोर 31st we have to create a batch and we have to start the training. तो 6 month या 3 month या 6 month की ट्रेनिंग होगी और 60 students will be benefited and certificate will be given by the Ministry of India. और वो सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में और लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और डिपार्टमेंट का सपोर्ट और हेल्प हमको चाहिए वो टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर 60 इससे स्टार्ट करते हैं 60 के बैच से, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हम जल्दी ही नेक्स्ट बैच भी हम स्टार्ट कर देंगे सर। और पर हेड कैंडिडेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव 7,000 रुपीज़ टू द यूनिवर्सिटी। फिर उसमें हमको रिसोर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ट्रेनिंग पे हमको उनको खर्च करना है। तो ये सबसे बड़ा टारगेट है। और कल हम दिन भर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेल के साथ थे। दे आर गोइंग टू गिव मेनी मोर थिंग्स टू आवर यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर और विजिट कर लिया है। और हो सकता है कि वो जल्दी हमको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी वो खुद प्रपोज कर रहे हैं कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का नहीं है, आप चाहें तो हम आपको दे सकते हैं। तो हम सबका गाइडेंस लेके हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमको मिल जाए। और लास्ट स्किल डेवलपमेंट सेल हमारा 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। हर एक स्कूल से एक फैकल्टी कोऑर्डिनेटर विद नोडल ऑफिसर। तो हम कंटिन्यूसली एवरी ईयर वी आर कंडक्टिंग नियर अबाउट 10 or 11 events, but this time this is 15th event of this year, and many more is going to be proposed by the forestry and other schools also. तो आपके सपोर्ट से हम स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा करेंगे। और मैं पार्टिसिपेंट्स और सारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को बधाई देता हूँ। आपका सपोर्ट ऐसा रहा तो हम स्किल डेवलपमेंट सेल को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर AK साहू सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने विचार करें। Today is very auspicious day for the simple reason that Hindu Navas drinks, and it's a World Water Day declared by UN in 1992. So I consider it as a great privilege and my pleasure to be amongst the forestry and environmental community this auspicious day. At the outset, I would like to say that the head of your family, Honorable Vice Chancellor, Professor Chakrawal, and his entire team, including his nominee, Professor Amit Saxena sir, who is amongst us. In spite of his busy schedule, you know already Professor Saxena. He is a man of computers and he plays with logics and many more things which I will narrate it being an engineer some other day. I know him for the past many years. Probably he has forgotten me. I met him many years ago and he is not recalling probably his memories, no problem. We have another special person with us, Sri Meena Saab, who is the Joint Director, Sericulture. And Sericulture too deals with the water and environment. So I welcome him also on this occasion along with the Dean of School of Natural Sciences, Professor S.C. Tiwari, and Head of the Department, Professor Chandra, Professor Bhuria, Course Coordinator, Dr. Ajay Singh, all the members of the faculty and students.
Indeed, it gives me immense pleasure to meet my young friends. I always prefer to meet. For the last 40 years, I'm in the research and development organization, except for initial few years as design engineer at Bombay. Afterwards, I joined the research organization, then I shifted to university, and like that my career is going on. For the last 22 years, I worked as dean. Few months back only, I have I got relief from the administration, and again I have been in the committee of the students as senior professor in environmental agriculture. First of all, I would like to congratulate Mr. Ajay Singh for selecting a very pertinent topic, Jal Shakti catch the rate. अब आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें जल के बारे में कह दी हैं, और मेरा एक ड्रॉबैक भी है, तो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर सिंह to remind me if my time exceeds. Water, I'm basically soil and water engineer, so I deal with soils and water. So, and water is close to be my heart. दिल भी आपका धड़कता है, मेरा भी दिल धड़कता है, सबका दिल धड़कता है। वो क्यों धड़कता है? क्योंकि वो एक ऐसा आइटम है जो उम्र भर 98 से 112 साल 114 साल का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है, वो एक जापानी महिला है, और उसका दिल भी जन्म से लेके आज तक धड़क रहा है, और उस धड़कने में, उस धड़कन को मेंटेन करने में एक बार ऑनलाइन उनके साथ मेरी मीटिंग हो चुकी है मैंने ईयर्स अगो। उनने जो महत्व बताया, उस महत्व का हिस्सा भी जल है। तो जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने रखा है, एक अलग से मंत्रालय बनाया है, बहुत पर्टिनेंट। I have worked for quite long along with the team of my people. I have been the chief scientist water for the Chhattisgarh region. I had been held many more portfolios that I will not discuss today. But what I will say that the water can regulate each and everything on the earth. It has got that tremendous power. You cannot imagine the power it possesses, and it can destroy you. It has got. That is why अर्थवेद यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे श्लोक अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि सुनाने लग जाऊंगा तो 10-12 श्लोक हैं। तो उसमें हमारे पूर्वजों ने एंटीसिपेट किया है कि पानी 7,000 साल पहले, can you imagine the life of 7,000 years ago? उस समय हमारे पूर्वजों ने एंटीसिपेट किया है कि जल रहेगी तो समृद्धि रहेगी। उन श्लोकों का अधिकतर अर्थ जो है वो यही है कि जल के साथ समृद्धि आती है। दूसरा जो सबसे बड़ा गुण है जल का, उसकी मोबिलिटी। मैं घर से निकला, मैंने पैसे रास्ते में पेट्रोल पंप में खर्च किए, DGUR ओनली एट वन प्लेस। वाटर है, अभी चंद्रा सर बात कर रहे थे कि डबरी बनाओ छत्तीसगढ़ में, और पेटू से लेके सारी कहानी उन्होंने आपको बताई चंद्रा सर ने। जब तक वो जल चंद्रा सर के तालाब में है तब तक ही उनका है। The moment it becomes water vapor and it comes into the atmosphere
it can move into the entire Brahmand. It will be away from the Chandrasar. But the pocket held, money held in the Chandrasar's purse remains with him. It doesn't go anywhere. But water is such a mobile and prosperous phenomena. The more you can catch it, the more prosperous you can become. And the person who don't care for it, they have to face lot of consequences. I will give you an example of near Copenhagen, one town in South Africa. Entire town municipality has to make a new town because of over exploitation of groundwater. और आज साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनको 28 लाख नए मकान बना के दिए हैं दूसरी लोकेलिटी में जहां पे जल की उपलब्धता है और आज भी वहां पे राशनिंग हो रही है पानी। आज भी वहां पे पानी की जो नई लोकेशन है उसमें राशनिंग हो रही है, मीटर लगे हुए हैं, निश्चित मात्रा में पानी आता है, निश्चित मात्रा में बिल आता है। तो जो पानी है उसकी महिमा में बोलूं तो दिन भर लग जाएगा, किसी और दिन आपसे चर्चा करूंगा। पर डिवास्टेशन कैसे लाए? नगर पालिका के ऊपर उनके बाइलॉज ऐसे हैं कि जब आप मकान लेते हो तो यू हैव टू, मकान बनाते हो तो यू हैव टू पे ह्यूज अमाउंट। लाइक इन सिंगापुर, if you buy a car, I have been to many countries abroad. सिंगापुर में आप कार खरीदोगे, कार की कीमत 10 लाख, टैक्सेस 8 लाख। You have to pay for 10 lakh car 18 lakhs minimum. Why? They are very pertinent about environment. Small country, maybe of 2-3 districts of Chhattisgarh, but they are so conscious about the environment. और आपको गाड़ी, आम आदमी को तो डिस्करेज कर, और बड़े बड़े मिलियनर वहां सिटी बस में चलते हैं और सिटी बस की फ्रीक्वेंसी every 2 minutes in almost all routes, and all city buses are EV vehicles, electric vehicles, causing no pollution. तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जल और वातावरण दो ऐसी चीजें हैं जिनका इतना ज्यादा समावेश है, इतनी ज्यादा क्लोजनेस है दोनों के बीच में। बॉन्डिंग इज सो स्ट्रांग, यू कैनॉट सेपरेट इट आउट। प्रोफेसर सक्सेना में एग्री विथ मी, ही इज ए मैन ऑफ मैथमेटिक्स, computer, he may be knowing logics. Being an engineer, I too know little bit. When we make a matrix, environmental matrix, water matrix, it becomes a large number of parameters. And when we deal it in 4 dimensions, that is length, width, altitude or height, and then time. I told you few minutes back, चंद्रासर के तालाब में जब तक पानी है रहेगा। The moment it evaporates, he cannot guarantee. The moment it percolates down, no guarantee whether it will go to the active purse of Professor Saxena or Professor Singh or Professor S.P. No guarantee where it will go, when it will reappear. The rate of movement below the surface is tremendously varying, tremendously heterogeneous in nature. Like here, I'm able to see beautiful colors among the students of various shirts, various shades. I too wear a normal shirt today. Can you imagine how much I'm wearing? How much Professor Saxena and Meena sir is holding? Meena sir is probably holding amongst us the biggest quantum of water. I can prove this.
I have made a study in Germany, University of Bonn. I went to way back to deliver few lectures, series of few lectures on water, maybe 22 years back. I calculated the quantum of water that is used in the hall. Here I will give you an example how much water our guest, Mr. Meena, is holding, carrying with him. He is wearing undergarments, I presume so. And that quantum, the cotton which we grow to make that item, it requires about 400 liters of water. I will request one of the students kindly keep on totaling the quantum which I am saying. Then he wears a pant shirt. Pant requires 1100 to 1400 liters of water, depending upon the quality. He is wearing a shirt which requires about 900 liters of water. Cotton which we grow and process the shirt and convert the cotton into a shirt, it requires about 900 liters of water. One jacket is wearing Professor S.T. Tiwari and guest Meena Sahab. It requires about 3,800 liters of water on an average. If you look into the particular quality, the quantum may vary. Now, whatever figures I have told you, that quantum is our honorable guest, Meena sir, is holding. If I tell you the truth, or one secret of Professor S.C. Tiwari, he is my friend, so I am taking liberty. He is holding in his cupboard. He is holding in his cupboard probably lakhs of liters of water. क्यों? क्योंकि इनके पास 10 जोड़ी शर्ट हैं, 10 जोड़ी पैंट हैं, 4 जोड़ी कोट है, सूट है. इन सब में जितना कॉटन यूज हुआ है प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, उस सबको ऐड कर लेंगे तो lakhs of liters of water is there in his cupboard alone. यहाँ जितनी मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स बैठी, इनके कपबोर्ड का मैं कैलकुलेशन करूं तो it will reach in crores because they want to change every day their clothing, their dress, their uniform, whatever you call it. So now we have to give a thought to this also. We have to give a thought to this. I published way back 20 years back a research paper on this topic. So what I wanted to say is, if I will take you from this hall to a field, because yours is the environment department too. When we look towards the forest, do you know how much water a tree consumes normally? Anybody? Any students? I would like to hear from the young friends. Nobody is having an idea? Minimum 230 liters to maximum 400 liters. Per day, a big mature tree of more than 15 years needs it. And if you plant a tree like eucalyptus, it requires 600 to 900 liters of water per day. I published a paper way back on drainage, and wherever marshy land was there we recommended the wetland and marshy land. Forestry and environmental students must be knowing. Wetland and marshy land, we recommended the plantation of eucalyptus, and it was reduced to an extent that
part of its area became cultivar, not whole area. So there are medical trees, there is a magic in environment, there is a magic in water. चंद्रा साहब को मैं अभी 2 गुपचुप खिलाऊं, ये बीमार हो जाएंगे, परसों अपने मित्र के यहाँ मेरे पड़ोस में आएंगे, फिर मैं इनको अपोलो ले जाके एक फ्रुक्टोज की बॉटल लगाऊंगा, ग्लूकोज की बॉटल, एंड ही विल बी मच मोर डायनेमिक एंड मे बी हेडिंग द डिपार्टमेंट इन a much more vigorous way. That fructose is nothing but 98% water, 2% sugar derived from the fruits. Fruits too are grown from water. So what I wanted to say in nutshell, that water plays a tremendous role. You cannot think of, you cannot imagine a university, you cannot imagine a department, you cannot imagine a college. I can kept on telling you for the days together. Not only on water, in environment also, in forest also, in agriculture also. छत्तीसगढ़ में एक जानकारी और दे दूं, then I will stop. धान का कटोरा कहते हैं। 1 केजी धान पैदा करने के लिए 2100 से 2300 लीटर पानी लगता है। आज से 15-17 साल पहले मैंने छत्तीसगढ़ शासन को रिकमेंडेशन दी थी हमारे टीम्स की साइंटिस्ट के मुताबिक कि हर बांध से पानी को नापा जाए और नापने के आधार पे कौन किसान कितना पानी उपयोग कर रहा है उसके आधार पे चार्जेस लिए, पर इसमें राजनीति इन्वॉल्व है। सरकार ने आज तक वो काम नहीं किया। कारण है कि सरकारें वो काम करने का डेयर नहीं कर पाती किसानों से। अभी क्या है, अभी मैंने आपको खाली एक उदाहरण दिया धान का, यदि आप गन्ने को देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो प्रश्न ये है कि हमारे पास, अभी तिवारी साहब ने बताया था, आपके डीन साहब ने, कि 2.5 या 2.6% ही फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर ही हम नहाने पीने से लेके हर चीज के लिए उपयोग करते हैं, एंड फ्रेश वाटर इज ओनली फॉर द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ट्रीज, एवरीथिंग। और उसमें हम कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज? वी हैव टू यूज ऑप्टिमल वाटर टू सी an area, watershed area, in such a manner how much water comes into the area, how much water we can make best use of it, and we can have round the year the crops from the area, forest area under forest there itself, industries to there itself, and many more things, and many more developmental work. So water can be used as a tool too. Some other day I can talk to you and tell how environment and water together becomes the tool, and that tool is so important in Indian circumstances that it can make tremendous change. It can make tremendous change in our country, provided it is implemented thoroughly and properly. Once again, I thank the organizer, Mr. Singh, our honorable guest, Professor Saxena, Sri Meena ji, Dean Sahab, S.C. Tiwari ji, Chandra Sahab, Julia Sahab, ये सब लोग मेरे पूर्व परिचित मित्रगण हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को आज यंग फ्रेंड से रूबरू होने का मौका आप लोगों ने दिया। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, और आपके ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर चक्रवाल के मार्गदर्शन में मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रमों की जो संख्या है वो बढ़ी हुई है। पहले भी मैं जीजीयू में कई बार आया हूँ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड I would like to thank in general the GGU for their love and affection with me. Earlier I was being here itself at College of Agriculture.
for long years, and I used to interact with the faculty and students that time. Now I have been shifted to Mumbai, so my interaction is little bit less. But once again, I thank entire GBU family for their love and affection shown towards me. I welcome Meena Sahab also. Probably first time I met him, and the young dynamic course director, Mr. Ajay Singh, for choosing a pertinent topic. My one message I would like to give to my young friends: catch the rain wherever it drops. Wherever it drops. If it is dropping on tree, it should be absorbed in tree. If it is falling on a field, it should be absorbed in the field. You have to keep the conditions such. If we can do that, India's prosperity, I can tell you with guarantee, each one of us is today we are having lakhs of rupees in our account. After 8 years, I have estimated that after 8 years, you will have multiple of 10. And if you could continue the profession, you can have multiple of even many more times. You can raise your income just by managing the water. There are many examples from industrial use of water to agricultural use of water. I have done consultancy also in this area. I have served as consultant for few organizations, and I can tell you with confidence that if you spread this message, prosperity of each one of us with whom my voice is going today will enhance. With these words, I thank the organizers and the entire audience presence over here for patiently listening to me. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर आपके इस उद्बोधन के लिए। अब मैं अगली घड़ी में हमारे एक और विशिष्ट अतिथि श्री राम मीना जी को बुलाना चाहूँगा कि आए और अपने विचार व्यक्त करें। आज दो शक्ति पर्व हैं, जल शक्ति पर्व और नारी शक्ति। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ आधी आबादी जो बैठी है वो नारी शक्ति है। इस नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आज से आपका दिन शुरू होता है, केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए शुरू होता है। धन्यवाद। साहू जी बहुत कुछ कह गए, इतना कुछ कह गए, मेरे कपड़ों पे कह गए। भरे बाजार मुझे क्या कर दिया, मैं आगे में बोलूंगा। बना दिया मैंने, क्या मेरा बुरीच बना दिया है आदरणीय सक्सेना जी, और मेरे बोलने के पहले दिन यहाँ से चल दिए। पता नहीं क्या गिला शिकवा है। फिर तो पहली बार मैं आया हूँ। चंद्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लगा। आप भावना जी ना, आपकी भावनाओं को मैं स्वागत नमन करता हूँ। तो आज का दिन सर आप नहीं थे तो मैं आपका स्वागत कर दिया था कि आदरणीय ये युवा चेहरा आ जाए। 4-5 दिन से मटक रहा है सतत, मतलब प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश और गंभीर प्रयास वो कर रहे थे। तो लोगों को फोन कर कर के कह रहे थे कि जल शक्ति जल शक्ति जल शक्ति। ठीक है, बहरहाल वो दिन आज आ गया। तो साथियों, संचय तो हमने करना है, बहुत सारी चीजों का संचय करना है, तो उसमें सबसे प्रमुख है जल का संचय करना, क्योंकि जल जीवनदायिनी है। वो है तो हम है। जैसे महोदय कह रहे थे दिल धड़कता है, हम अभी तक नहीं समझ में, हम तो समझ रहे थे कि प्यार मोहब्बत में दिल धड़कता है, लेकिन आपने बताया कि जापान की महिला 112 साल की, वो पानी के कारण दिल धड़कता है। जानते थे, मजाक कर रहा था।
तो पानी की आवश्यकता है। संयोग से मेरा डिपार्टमेंट सेरिकल्चर, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेरिकल्चर हर साल 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख अर्जुना के पौधे लगाता है। सबसे ज्यादा वाटर होल्ड कौन करता है? टर्मिनेलिया अर्जुना। अभी हम डबरी की बात कर रहे थे, ठीक है, कंट्री किट्स भी हम खोले। हमने ये पाया है सेरिकल्चर में कि हमने इतने अर्जुना, और पहली बात ये रेन फेड कंडीशन में होता है। अगर हम एक सच्ची नीयत से प्रयास करें तो पौधे लगाएं तो काय के लगाएं? अर्जुना के लगाएं। नर्सरी रेस करें, 3 साल के बाद उसको हमारे फील्ड में लगा दें। अगर हर आदमी 10-10 अर्जुना लगा देगा ना, तो जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे जो अनुभव है, पानी की प्रतिपूर्ति होगी। वाटर लॉग एरिया में भी होता है, रेन फेड में भी होता है। सर ने जैसे यूटिलिटीज का बताया था, कंजम्पशन बहुत है, उसकी जगह हम क्या लगाएं? अर्जुना लगाएं। क्योंकि आप तो फॉरेस्ट्री वाले हैं, आप में से बहुत बंदे मेरे पास गए हैं, कितने गए? ऊंचे हाथ करो जरा। आपने सेरिकल्चर में क्या खोया, क्या पाया? बोलेंगे कुछ? सर, आपके बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देने का हमने प्रयास किया है, और जो चर्चा आज हो रही है, इसको पिछले 3.25 साल से मैं आपके बच्चों को समझाते आ रहा हूँ। अमल में आना नहीं आना एक अलग बात है। वो होता है कि हम मन से चर्चा करते हैं, दूसरा वो होता है कि जितने ऑडियंस सामने बैठे हैं वो अपने जहन में उन बातों को लाते हैं कि नहीं। पर यहाँ से हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास जिंदगी का कुछ अनुभव है। उस अनुभव की जो बातें हैं उसमें से 2% लोग भी गेन कर लेंगे तो आज का कार्यक्रम हमारा सफल रहा। साहू जी ने कहा, दीन सर ने कहा, तमाम बातें कही। ये उनके अनुभव है, वो नहीं बोल रहे थे, उनके अनुभव, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा था। ठीक है ना? तो साथियों, पर्यावरण में सुधार हमको लाना है। मैं राजस्थान मूल का हूँ। बहुत सारे रेगिस्तान ऐसे हैं जहाँ का कल्चर ऐसा है कि जहाँ छोटे छोटे गांव होते हैं तो दूर दूर गुंडियों से महिलाएं पानी लाती है। जैसे 4 गुंडी पानी लाई तो वो अपने घर में, ये जो स्क्रीन देख रहे हैं 2x2 की, उस पर बैठते हैं, उसी पे बैठ के वो नहाते हैं, और 8 फीट दूर एक गड्ढा खोद के रखते हैं, 8 फीट दूर। जब वो नहाते हैं ना, वो पानी पर्कुलेट होकर कहाँ जाता है? उस गड्ढे में जाता है। ठीक है, वो बर्तन भी मांजेगी वहां, तो वो पानी भी कहाँ जाएगा? वो पानी अजय पीने योग्य होता है क्योंकि पूरा सैंडी सैंड है। तो इस तरह से वाटर मैनेजमेंट हमको करना है। अगर उसने 4 गुंडी पानी लाई और तीसरे दिन उसमें अगर 1 गुंडी पानी का संचय भी हो गया तो अगले दिन उसको 2 गुंडी पानी लाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो हमको जीवन में अपनाना है। और क्योंकि मैं सेरिकल्चर का हूँ, हमारा तो ध्येय है पौधे लगाना। साहू साहब, हर साल हम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों की तादाद में हमने पौधे लगा दिए। छत्तीसगढ़ शासन में जो 55 डिपार्टमेंट है उसमें सबसे छोटा डिपार्टमेंट मेरा ग्राम उद्योग, सबसे छोटा, कम बजट एरिया, कम बजट का, लेकिन देखने और दिखाने को सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है? सेरिकल्चर। आज अगर कोई वीआईपी पर्सन कहीं बाहर से आए और जिला प्रशासन से पूछे कि क्या दिखाया जा सकता है, तो कोई भी वर्क डिपार्टमेंट ये नहीं कहे सर मेरी बिल्डिंग देख लो, क्योंकि वो तो हर जगह देखते हैं। तो उनके जहन में एक बात आएगी, सब सेरिकल्चर दिखा रहे हैं। सर 12 महीने ताला लगा रहता है सेरिकल्चर एक्टिविटीज को देखने के लिए, और जब गार्डन में जाते हैं तो बड़ा मनभावन दृश्य रहता है। जब पौधों के पास खड़े होते हैं ना, तो दिल को कितनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और वही सिलतवाम और तमाम चीज़ें जो हमें प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आप सब युवा हैं, आप भी प्रयास करें। आज मुझे पहली बार बुलाया तो दिन सर, अजय जी,
गुड़िया जी और चंद्रा जी, साहू जी, एक गेट टुगेदर मेरा हुआ है। भावना जी, आप बुरा मत मान जाना, भावना जी भी, तो सब लोगों से एक मुलाकात मेरी हुई है। देखिए परिदृश्य कितना जल्दी बदल रहा है। पिछले 4 दिनों से हमने देखा था कि जो गर्मी आई थी वो चले गई, कितना चेंज हुआ। जैसे सावन की झड़ी लगती है ना, वैसे झड़ी लग गई थी और इतना कोल्ड। ये सब परिवर्तन हो रहा है वातावरण में। अजय भैया परसों दिन ऐसा लग रहा था कि सावन की झड़ी लगी, लगा आपको? ऐसा लगा कि नहीं? तो बरबस में बालकनी में खड़ा था तो कोयल तो को बोलती है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मार्च का महीना भी है, सावन भादो है। तो बरबस एक पंक्ति मुंह से निकल रही लता मंगेशकर की, आई बरखा बहार प्रेम न हुआ, आई बरखा बहार प्रेम न हुआ, सैया के गले लग जा, लग जा, आई बरखा बहार प्रेम न हुआ। तो ये वेदर चेंज होता है। तो इसी मंशा से जीवन को मुस्कुराते हुए जियो, लेकिन संचय करो। किसका संचय करो? अर्जुना का, अर्जुन की खाल का। वो दिल का ख्याल रखेगा और अर्जुन पानी का भी ख्याल रखेगा। तो पर्यावरण का सुधार बहुत जरूरी है। और लीन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। साहू जी, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मैं रेशम का कीड़ा वहीं के वहीं घूमते रहता था क्या। तो आज मुझे ऐसा लगा कि बड़ी दुनिया भी है, तो आज मैं आपकी दुनिया में आया हूँ और मैं भी तैरना चाहता हूँ कि तालाबों में, समंदर में मैं भी तैरूँ। ठीक है मैं आप गोता भी लगा सकते। सर, गोता तो मैं लगाया हूँ, लेकिन मैं अपने मछली पालन छोटे छोटे तालाब में गोता लगाया, लेकिन अब मैं समंदर में गोता लगाना चाहता हूँ। मैं आपके अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ वाटर फॉगिंग कर। सर एक बार बताऊँ, मेरी 33 साल की नौकरी में बहुत हद तक यहाँ के बहुत सारे बच्चे मेरे साथ गए, 4 साल से जुड़े हैं। मैं केवल हंसता और मुस्कुराता हूँ। 33 साल की नौकरी में मैं कभी भी उदास, दीनहीन, किराए की हंसी नहीं हंसा। दिल से हंसा, प्यार मोहब्बत से जिंदगी जिया। और सही में आज मैं कह सकता हूँ कि जिंदगी सही में मैंने जी। तो साथियों, यही मशवरा आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके डीन साहब से अनुरोध करूंगा भविष्य में सेमिनार हॉल में वाटर फॉगिंग की व्यवस्था करें। बीच में 2-2 मिनट सेंसर से यू कैन पुट ऑन दी वाटर मिस्टिंग और फॉगिंग एंड आवर फेसेस विल बिकम more bright, more shining, more beautiful and more cheerful, and you will be grasping more. धन्यवाद सर अपने उद्बोधन के लिए। हमारे नेक्स्ट विशेष अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर महेश श्रीवास्तव सर जी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए।
नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, सुनाई दे रही है सर। ओके। उधर से आने वाली आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं सुन पाया। मैं इंतजार कर रहा था 11:30 बजे से ही अपने टर्न का। एक्चुअली एक मीटिंग में था, वहां मीटिंग से मैं बीच से निकल कर आया इस लेक्चर के लिए। लेकिन अब समय तो काफी कम हो गया है, तो नो प्रॉब्लम, आई विल शॉर्टन माय लेक्चर एंड ट्राई टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। और बिलासपुर से मेरा पुराना संबंध है। मैं यहाँ संजीव कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडियो से आप लोगों के सम्मुख हूँ। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। Myself, Ajay Kumar Srivastava, head of the department botany, St. Xavier's College, Ranchi. Without wasting much time, I would like to enter into my lecture. Now, I think I am audible to everybody. Okay. और मुझे खुशी होगी कि अगर कोई भी प्रतिभागी बीच में कुछ भी टोक करके, रोक करके कोई भी प्रश्न पूछे तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। क्योंकि ये सेमिनार एक टू वे अफेयर होता है, ऐसा एक तरफा नहीं कि मैं कहूं और आप सुने बस बात खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो मैं कहूंगा कोशिश, एक मिनट, ये ऑर्गेनाइजर का ही फोन आ रहा है, मुझे उठाना पड़ेगा। तो मनीष सर, प्रोफेसर मनीष सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। Good afternoon, sir. Am I required to speak? I request the staff sir, please convey your message. Sir.
Good afternoon, everyone. And I'm really sorry because my presence today is more than a disturbance rather than contributing to the whole program. But of course, I'm really sorry for joining this inaugural ceremony very, very late. And since we are thinking and talking about a very, very important issue, that is the World Water Day we are celebrating, I welcome Honorable Professor Amit Saxena ji, who is representing Honorable Vice Chancellor Professor Alok Kumar Chakravarti ji, the Dean of the Faculty Professor S.C. Tiwari ji, Head of the Department, the expert who have come here. I was just listening to Mr. Ajay Srivastava ji and other speakers who are present here today. My only submission to this program is that there is hardly any person here in the audience or whosoever is connected to online who does not understand the importance and value of water conservation. We all know that water, in all respect, is very, very important for all of us. Whether it is for the human needs, it is for the industry, it is for the labs, for any irrigation or whatever. But without water, you don't have anything in your life. I think in this workshop only, in this session only, आज आपको दोपहर को 3 बजे तक पानी ना दिया जाए किसी को भी, तो मुझे लगता है कि सबको पानी की जरूरत समझ में आ जाएगी. The thing is that why are we celebrating the World Water Day? Of course, it is a UN resolution, and this is one of the SDGs, Sustainable Development Goals. And I think, if I am not wrong, this is the goal number 6, that is on the water conservation for life and sanitation. So this is of course there. But the importance of water is as old as the life of human being on this in the most primitive form. The population of the world is going on like anything. The unbalanced distribution of the resources from the nature is highly critical nowadays. The availability of water or any of the life-sustaining minerals or the products very critical in condition. And we can see that there is a lot of lack of awareness about how to use the things. So I think because of this today, this particular workshop is more focused on the purpose of the relevance of understanding the need of water and sensitization towards the conservation of water. So those who are new here, the new students are here, and those students who are very socially and they may really transmit this whole proceeding to the society or community in which they are living. I think in that way they are sensitize the people about the importance and conservation of water, purification of water, safety of water, preventing water from contamination. If this is done in very small pockets, even by a single student, I think this workshop is very, very successful. So sensitization, I think, is one of the goals of this workshop today, and that is one of the goals of the UN also. So with my heartfelt wishes to the organizers who have taken a very important day today, though it is sometimes it becomes commemoratory that today on the 2nd March every year we celebrate, we organize the programs on the World Water Day. That is one thing. But I think the department at least can have initiation of one program in the department which will run throughout the year. And the groups of students can be given this task that what are you going to do throughout the year for the conservation or the sensitization about the conservation of water to our campus students, to the faculty members, to the family members who are living in the campus. So you can start from here. We may talk of very big issues, very big papers, statistics and data, but to work at the ground level is equally important. So I believe in the capacity and competence of all the students and all the members here. Let us plan to have something to be done from this department for the whole coming year, next 21st March.
so that when next year we celebrate this officially, so we will be able to present the report. Yes, look at us. Yes, after the last workshop, we have taken this thing seriously, and the purpose of the workshop, that is sensitization, was well taken. And today we are standing to report what we have done and what we have achieved. If this is done, I think this will be a great success. So my best wishes to the organizer, and thanks for calling me and giving the opportunity to speak. Thank you so much. Thank you so much. सर वहाँ से उसका ऑन कर दीजिए सर. Hello. Thank you, Registrar sir, for your good words. And as you have suggested, yesterday we have celebrated World Forestry Day. And for your kind information, sir, we have instituted one young nature conservationist award. So we will be assessing the performance of the students, what they are doing continuously for the whole year. So your suggestion is very good, and we have very well taken it. And next year when we invite you for this program, definitely we will present the report what our students have done. And I have announced this award to the young students of our department that they are doing good work for nature conservation, which includes water also, and they will be given a award with some cash prize. So thank you once again, sir, for your kind words. Now I invite the acting Vice Chancellor or the Vice Chancellor nominee, Professor Amish Saxena ji, for his kind address. Sir, please. The previous speakers have spoken very thoughtfully. All my previous speakers have given very interesting talks. Like Dr. Sahu has given a very pertinent, very interesting, then followed by Meena ji. So they have given a realistic picture. I can see in the brochure, or I can see in the schedule that there are 4 technical sessions, 4 speakers in the 2 technical sessions for the whole day. The Department of Forestry has been observing and has been organizing these activities. I was again few days, I think 1 month back, I was again here in the occasion. So congratulations to the whole Department of Forestry. They have been doing very nicely, arranging all the activities very meticulously and very carefully. The topic of today's theme is the catch the rain, save the water, catch the rain. Naturally, if you don't catch the rain, then you will miss the train. So that is why I connected it, that the importance of water cannot be ruled out at any corner. I think it is the first thing. I have heard several names based on Chasa, but not a single name based on Bhuka. So there are several instances where we can observe the importance of water. And water, you can see, the water is served for any purpose. Today is the starting of our Navratri. So there are few people who stay only on water.
for the whole 1 day, for 2 days, or some people can observe for 9 days, based only on water, or maybe some dry food. What जैसे we used to say the money saved is money earned. So saved is water, saved is water earned. When we I take my example that when we are saving, then our water is always the water is when my building is standing or the water is running full time. It's not turning off. The tap is always on. Even when complete our the facial work, even then it is on. So we can say, but naturally the cost of water varies. When I was in Seattle this year, so I found that 500 ml water was costing nearly $1, and one cold drink, the Thumbs Up or Pepsi, that was costing only 60 cents. So then I thought, why people don't consume only cold drinks? But I realized that I can survive with water, but I cannot survive with cold drink, whatsoever it is cheap or whatsoever it is costly. The cost of one bottle when I was in Kuwait, I found it is $1. At that time it was 150 rupees. So the importance of water can be understood by each and every one, that without water we cannot survive, we cannot live any longer. The message for the students, message for every individual, not only the students, because we all rely on water. The message is that please save the water. We cannot generate water, but at least we can save. That's why the message is, that's why the theme is catch the rain, because you cannot generate the rain. Only you can catch it. Don't allow any drop of water on the surface or let it waste. So that's why the message is, theme is catch the rain. The message is very clear and sound, and as is price the next so this is really a wonderful thing, and this will give everyone to everyone. I think not only students, others can also consider for the price. So I this workshop was in all the students, all the departments, and I also welcome all these committees who are here the technical support 1 and 2. So this is all the best, and thank you for inviting me for this function, giving me the opportunity to speak before all of you. So thank you very much. Thank you so much, sir. Now we come to we are the end of the inaugural session. Now it's time to give our respect and love and to our respected guest. So I would like to invite our dean sir to give a memento to our हमारे प्रतिनिधि सेना सर memento प्रदान करें सर. हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर भाना हमारे प्लीज हमारे सम्मान करें.
डॉक्टर अजय सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे हेड सर प्रोफेसर जनरल सर हमें तो डॉक्टर विजय प्रधान अनुरोध करूंगा कि हमारे वरिष्ठ सरकार सम्मान करें। I would like to invite Dr. Vijay Prakash for vote of thanks. थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मैं अजय सर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो है धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर बुलाया। आज विश्व हिंदू नववर्ष दिवस है, तो सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें आप लोग और जीवन में खूब तरक्की करें। और माँ शारदे को प्रणाम। हमारे प्रेरणा स्रोत विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय श्री कुलपति कुलगुरु प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमेशा जिनके मार्गदर्शन में इतने सारे प्रोग्राम विश्वविद्यालय में होते रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के तमाम और मोटिवेशनल प्रोग्राम और सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो उनका हमेशा जो है आभार और धन्यवाद हमारी तरफ से आभार रहेगा। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अमित सक्सेना सर कुलपति नामी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभार प्रेषित करता हूँ कि सर अपने बहुत व्यस्त समय में से निकाल करके काफी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सर को पता है कि सर ने कहा कि इफ यू डोंट कैच द रेन यू मिस द ट्रेन। तो पानी के महत्व को हम सब समझते हैं और जल का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बहुत बड़े बड़े वक्ता और जानकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री प्रोफेसर A.K. साहू सर, एक्स डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जिन्होंने बताया कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े कितना कितना पानी लेते हैं, रंग बिरंगे तमाम सारे इस जीवन में जो रंग हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, सब पानी की जरूरत है और उस पानी की महत्वता को उन्होंने बताया। आप लोग अपने घर में कबर्ड में जाके देखेंगे तो सर ने बताया कि कितना 100 लीटर टन लाख टन का पानी जो है आप लोगों ने कबर्ड में पैक करके रखा है विभिन्न कपड़ों के माध्यम से। ये तो सिर्फ एक कपड़ों की बात हो गई। सर ने कहा कि बिल्डिंग की बात है और आपके जो शूज हैं और तमाम सारी चीजें जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, सब जगह पानी की जरूरत लगती है। जैसा कि आलोक सर पहले भी कह चुके हैं, रहमन पानी राखी है बिन पानी सब छू और पानी गए न उगरे मोती मानस छू। तो पानी की महत्वता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साहू सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है जो आप लोगों ने थोड़ा सा देखा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। आफ्टर जो टेक्निकल सेशन होगा उसमें साहू सर आप लोगों को बहुत सारे ज्ञान की बातें बताएंगे और काफी जानकार है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग, हम सब लोग उससे लाभान्वित भी होंगे। हमारे स्पेशल गेस्ट विशिष्ट अतिथि श्री राम मीना जी, ज्वाइंट डायरेक्टर सेरिकल्चर, जो कि एक बहुत ही कवि हृदय के प्रतीक होते हैं और इसके साथ में मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से खुश रहने की बात कही
आपको अर्जुन के बारे में, अर्जुन के एक इम्पोर्टेंस के बारे में बताया सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। वैसे भी अर्जुन का जो पेड़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी जो छाल होती है हृदय के लिए बहुत जरूरी होती है। और सर ने जैसे कहा कि जो अर्जुन की छाल है वो उसके लिए जरूरी है, तो आपका हृदय भी पानी को मतलब पानी की जरूरत है। हमारे शरीर में भी सब पानी ही है। एक तरीके से कहा गया है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, तो जल भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट घटक है जिसकी की जरूरत है। तो सब लोग अर्जुन को लगाइए, पानी बचाइए और पानी को कंजर्व करिए, दिल को भी अपने मजबूत बनाइए। तो मीना सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कविता के रूप में हर तरीके से पानी के महत्व को और चीजों को आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत रोम रोम से उसे सुना होगा और अच्छे से महसूस किया होगा। फिर हमारे डीन प्रोफेसर एस सी तिवारी सर, जिनके मार्गदर्शन और हमेशा सपोर्ट, जो विभाग के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, विभाग के लिए कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमेशा से मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं देखता हूँ कि कंटिन्यूअस सर का एफर्ट रहता है कि विभाग को किसी तरीके से आगे बढ़ाना है। और जो भी इनसे हो सकता है अपना जितना भी, आप समझ लीजिए कि घर जाने के बाद में जो सोने भर का समय है वो छोड़ के बाकी सारा समय जो है विभाग और विश्वविद्यालय के लिए सरकार रखता है। तो मैं हमेशा सर का आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि जिनके मार्गदर्शन और सपोर्ट से जो कार्यशाला है कैश धरेन, जिसके बारे में कहा गया है कि आप लोगों को करना है। वैसे तो पानी सब लोग बचपन में खेलते हैं और पानी, बारिश का पानी पकड़ते भी होंगे, कभी हाथ से, कभी बाल्टी में, कभी कहीं, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग बड़े हो गए तो बड़े स्तर पे करना है। बिल्डिंग से इकट्ठा करके जो है उसको ग्राउंड वाटर में इकट्ठा करना है। फिर हमारे तो मैं तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है। हमारे एचओडी प्रोफेसर के चंद्रा सर हमेशा बिल्कुल आपको एक ही एनर्जी में सुबह से शाम तक मिलेंगे, बहुत यंग, डायनेमिक, और जो ऊर्जा आपको सुबह मिलेगी वो शाम को भी मिलेगी। इतना सपोर्टिव नेचर है कि कभी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई हमारा मतलब बॉस या अधिकारी बैठा हुआ है। सर हमेशा एक बड़े भाई या हर तरीके से सर का सपोर्ट रहता है। कार्यक्रम को कोई भी कार्य हो बिल्कुल हर तरीके से लग जाते हैं सर। कभी ये नहीं देखते कि क्या कौन क्या है या हम किस मुद्दे पे हैं। सर को जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, कार्यक्रम के लिए या विभाग के लिए हमेशा रहते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर धूरिया सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर का हमेशा मार्गदर्शन और अच्छी सलाह, हमेशा एक जुनून बात सर करते हैं हमेशा हर प्रोग्राम के लिए। हर जो भी, वैसे भी आप पर्सनली भी कभी बात करते हैं तो कभी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं देते हैं, बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलता है और सपोर्ट हर कार्य के लिए सरकार रहता है। हमारी भावना मैडम जो भी अभी बैठी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो इसके नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर रोहित राजा जी स्किल डेवलपमेंट के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से काफी कुछ मतलब प्रोजेक्ट भी लिए हैं और आप लोगों का स्किल के एनहांसमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप स्किल होते हैं, बहुत अच्छी चीज है, एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। और वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आप लोगों के बारे में सोचा और एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया। ये चाहते हैं कि आप लोग कुछ सीखें और सर के पास बहुत ज्ञान है, काफी चीजें, रिमोट सेंसिंग का बिल्कुल ज्ञान के भंडार है सर, तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे ही हमारे स्कूल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अतुल कुमार भारद्वाज सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस नेचुरल रिसोर्सेज, जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इस पूरे स्कूल के नेचुरल रिसोर्सेज के, इनफैक्ट फॉरेस्ट्री ही नहीं, फार्मेसी के भी सर स्कूल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरा सब दोनों डिपार्टमेंट मिला करके। और इनके मार्गदर्शन में एक्टिविटी होती रहेगी और इनको ये जिम्मा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आगे इसको बहुत अच्छे से ले जाएंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हमारे जो साथी हैं डॉक्टर चावलानी मंटू सर, जो कि फैकल्टी हैं, सर का भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है हर प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल
एकदम पूरी तरीके से लगते हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है यहाँ पर जो भी रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं, जो किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना दिन रात एक किए हुए हैं, सबको जो है, चाहे डॉक्टर ये रिसर्च स्कॉलर श्री आलोक चंद्राकर जी, आशुतोष आनंद, और भी तमाम जो शोध छात्र हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या यहाँ पर प्रेजेंट है, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। और एवं लास्ट में हमारे जो प्यारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनके बगैर ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है या पार्टिसिपेंट, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने स्पोर्ट्स के बाकी चीज़ों से रूटीन से समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। अब मैं अतिथियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि एक टीम के लिए आप सभी इन्वाइटेड हैं, और प्रतिभागियों से अनुरोध है कि यहीं बैठे रहिए प्लीज। हम सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, टेक्निकल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके जलपान की व्यवस्था हम यहीं पे कर रहे हैं, तो आप कृपया यहीं पे बैठे रहिए। और नाउ वी विल कंटिन्यू टू आवर टेक्निकल सेशन। आपको एक और रिफ्रेशमेंट देना है, ये तो क्या रेडी, ठीक है? The participants who are joining with us online, please stay here. We will continue session in few minutes. Our first lecturer, our first resource person is Professor Ajay Officer from Ranchi University. He is head of Department of Botany, and he has vast experience in water conservation and related work. So he will be giving his lecture on drinking water conservation at the ground level. So we will hear him soon. Please stay here. Thank you so much. आप सबको एक बार फिर से नमस्कार। मेरा समय तो लगभग क्या पूरी तरह खत्म हो गया है, और मुझे दूसरे मीटिंग में भी जाना है, तो मैं 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि अपना ये वाइंड अप कर लूं, और जो मुख्य बातें हैं सिर्फ उन्हीं पर मैं फोकस करना चाहूंगा। तो प्लीज होल्ड ऑन टू दिस, और वी कैन वेट फॉर 5 मिनट्स सो दैट द पार्टिसिपेंट्स डू कम बैक। I do understand even the online participants, they must be having a small break for tea and something, despite the fact that they are logged on. Hello, am I audible? Yes, sir. Please suggest when do I begin? Yes, sir. And what about the audience? Yeah. Let them come back in 5 minutes. Okay. And since the time is very short, do not run the PPT. Okay, you can share the PPT with the participants later on. Okay, sir. सिर्फ इसको लेकर जो दिल से आवाज निकलती है पानी को लेकर, बस उसी की मैं चर्चा करना चाहूंगा, और आशा करूंगा कि 2-4 भी पार्टिसिपेंट्स अगर मेरी बात सुन लें तो शायद मेरा पर्पस सर्व्ड हो जाए। Okay, thank you. Muthu Kumaran ji from Tamil Nadu, are you comfortable with a little bit of Hindi? One by one. Okay.
The audience required to please take your seats. Okay. पानी पानी हम लोग तो बहुत पानी करते हैं. We do a lot of things about water. Water, we need to conserve water, we need to save water, we need to harvest water and everything. Okay, but we speak too much and we waste too much. We keep changing clothes, we use so many other things, we purchase new vehicles every now and then, whenever required, 2 years, 3 years, and change the vehicle. You know, it comes at a cost. We need to understand this. Okay. पानी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा. जब तक सांस तब तक आस, जी भर उसको जी लें. धरती पर जब तक है जल, जी भर उसको पी लें. लेडीज एंड जेंटलमैन, पानी इस पृथ्वी पर हमेशा से नहीं था. बहुत पहले की बात है. पानी यहाँ पर भाप के तौर पर था. बादल ही बादल थे. जमीन पर, सतह पर कोई पानी नहीं था. लेकिन धीरे धीरे पानी सरफेस पर आया. और भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि ये पानी अब हमेशा रहेगा. जब तक है पानी यहाँ, बस तभी तक हमारा जीवन है. इसलिए पानी है, हम इसका उपयोग कर ले, भरपूर उपयोग कर ले, मगर दुरुपयोग न करें. मंगल ग्रह पर भी कभी पानी था, वहां जीवन था. ये नेचुरल रिसोर्सेज. प्लीज आप लोग म्यूट कर ले अपने आप को. ऑर्गेनाइजर प्लीज म्यूट द, प्लीज म्यूट. या थैंक यू. मंगल ग्रह पर भी कभी पानी था, वहां जीवन भी था. लेकिन क्या हुआ? पानी खत्म हो गया. मंगल ग्रह छोटा सा ग्रह है और सूरज से पृथ्वी की तुलना में थोड़ा दूर भी था, इसलिए वो जल्दी ठंडा हो गया. और उसके अंदर का जो लावा था, जिसकी वजह से जीवन था, वो लावा ठंडा हो गया. और सरफेस का जो पानी है उसको वो खींचकर रस्ट बना दिया, सॉइल बना दिया, रॉक बना दिया. और सरफेस पर कोई भी पानी नहीं रहा और नष्ट हो गया. तो आज के दिन में मंगल ग्रह, बावजूद इसके कि उस पर पानी के निशान है, लेकिन कोई पानी नहीं है और वहां पर कोई जीवन भी नहीं है. और पृथ्वी पर भी भाइयों और बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर भी वही स्थिति आ जाएगी. ऐसा नहीं है कि जब आप नाना दादा नानी दादी बनेंगे तब तक वैसा नहीं है. मतलब करोड़ों साल बाद पृथ्वी की भी वही दशा होगी. और उस समय फिर जुपिटर, सैटर्न वगैरह ग्रह जो है, वहां पर जीवन की कुछ संभावना होगी. लेकिन वहां पर ऐसे लोग अजय सिंह, अजय श्रीवास्तव, शरद शुभ्र, अजंता जी, इस तरह के नाम वाले नहीं होंगे. हो सकता है कि वैसा कोई जीवन आए जो ह्यूमन बीइंग से मिलता जुलता हो ही ना, क्योंकि वहां का पानी होगा लेकिन पर्यावरण बिल्कुल बदला हुआ होगा. आज हमारा फोकस ये है कि हम पानी हमारे लिए क्या है. अब जैसे हम कहते हैं पानी है तो हम साबुन वगैरह भी भरपूर यूज करते हैं. कोई हमें बताएगा कि अगर हम जरूरत से ज्यादा साबुन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आपने नाम सुना होगा डेल्टा का. डेल्टा का नाम सुना होगा. यदि आपने सुना है तो हाथ उठा दे, मैं देख लूंगा आप लोगों को. डेल्टा का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने नहीं सुना है. ओह, थैंक यू वेरी मच. दैट इज ओवरवेलमिंग. ये डेल्टा बना हो कैसे होगा? यदि आप वो समझते हैं तो एक बात मैं बताने जा रहा हूं. पानी के दुरुपयोग से संबंधित एक बात मैं बताऊंगा, वो भी आप शायद समझ जाएंगे. डेल्टा बना कैसे था? नदियां थी, हिमालय से निकलकर नदियां आती हैं. आते रास्ते में कानपुर है, पटना है, बनारस है, ये सब है, कलकत्ता है. वहां आकर के वो समुद्र में मिल जाता है. ओके. अब ये समुद्र में तो खारा पानी है, तो उस पानी में जो कोलॉइडल इंप्यूरिटीज हैं, वो जहां समुद्र के, नदी के मुहाने पर वो आएगा, वहां आते ही वो वहां बैठ जाएगा. क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि वहां खारा है. वहां पर खारा है ना. मान लीजिए आप एक इस तरह का प्लेट ले लें. प्लेट, ओके. आधा निचला हिस्सा आप नमकीन कर दें. नमकीन पानी डालकर नमकीन कर दिए, और यहां से अब दूध हल्का हल्का बहाने लगे, तो दूध यहां बहता हुआ आएगा, धारा आपको नजर आएगा. लेकिन जैसे ही यहां खारा एरिया में आएगा, वो दूध आपको साफ नजर आ जाएगा. दूध यहां फटने लगा है ना. तो यही बात है. नदियां जब ये ऊपर बहकर आती हैं, यहां तक आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोई खारापन मिला, वहां पर
उसका कोलॉइडल इंप्योरिटीज जो है वो बैठना शुरू कर देता है। ओके, तो हम लोग बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और वहां पर कोई बड़ी नदी भी होगी ही, तो नदी से हम पानी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं उसी में, गंदा पानी। तो उस गंदे पानी में साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, शैम्पू, तरह तरह की चीजें होती हैं जो उसको खारा बनाती हैं। ठीक है, अब और सारी गंदगी भी जुड़ती है उसमें। नतीजा क्या होता है, हर बड़े शहर के पास जो नदी है वहां पर गंदगी जमने लगती है, गंदगी काफी बैठ जाती है। और किसी भी बड़े शहर को आप देखो, इस पीपीटी में मैंने 4 इमेजेस समाविष्ट किए हैं, वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, अजय सिंह सर शेयर कर देंगे आप लोगों को। उसमें कानपुर है, बनारस है, गोरखपुर है, दिल्ली है, ये सब का इमेज हमने डाला है, और सैटेलाइट इमेज। उसमें आप देखिएगा कि हर बड़े शहर के जो नदी पर अवस्थित है, हर बड़े शहर के बाद वहां पर एक नदी पर आइलैंड बन जाता है। वो आइलैंड क्यों बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है, वो हमारे पाप को परिलक्षित करता है। हम जरूरत से ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हम मिनिमाइज कम करें। ज्यादा साबुन इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा साबुन इस्तेमाल कीजिएगा, वहाँ इम्प्यूरिटीज बैठेगी। और शहर है, वहां तो नदी थोड़ी पतली होती है, तो वहां तो धारा में निकल जाएगी वो गंदगी। लेकिन शहर के बाहर आप जाके देखिएगा, वो इमेजेस मैंने दिया है, वो रिवर आइलैंड्स के, वो वहां पर वो जम जाता है फिर, और जमने के बाद वहां पर आइलैंड बन जाता है। तो मतलब ये बहुत खुश होने की बात नहीं है, ये बता रहा है कि हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने क्या क्या पाप किए हैं, वो परिलक्षित हो रहा है। इसमें कुछ कुछ हमने इमेजेस भी दिए थे, मैं बताऊंगा आपको बाद में। हाँ, ग्रासरूट लेवल पर हमें पानी संरक्षण को बचाना है, उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आ जाए और करोड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट बना दे तभी कोई काम होगा, ऐसा नहीं है। सरकार का काम है, वो सरकार को करने दीजिए। हमें इस बात से मतलब रखना चाहिए, हमें क्या करना है, हम रोज के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। हम नहाने गए, नल खोल दिए, बाल्टी भर गया, बाल्टी से पानी लीक ओवरफ्लो कर रहा है, कोई बात नहीं, और पानी तो बहुत है ना, मत सोचिए पानी बहुत है, हमें जितना चाहिए बस अब यही मानिए कि बस उतना ही पानी है। अब बाल्टी से नहाने का काम कम कीजिए, आप उसके बजाय आप शावर का इस्तेमाल कीजिए। बाल्टी से आप नहाइएगा तो क्या होगा, आपको एक मग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो एक हाथ तो आपका फंस गया मग में, और एक ही हाथ से आप नहा पाइएगा। ओके, आप शावर यूज कीजिए, और शावर की भी रफ्तार आप कम रखिए, और दोनों हाथ का इस्तेमाल कीजिए, तो कम पानी में ही आप पूरी तरह से अपने आप को वॉश कर लेंगे। मग से आप नहाइएगा तो मग में 90% पानी तो बिना आपके बदन को छुए निकल जाएगा, लेकिन शावर है, आप कम कर लीजिएगा तो फैल के गिरता है, तो कम पानी ही ज्यादा फैलता है। इसके बाद होता है खाना बनाने में, बर्तन में आप डिटर्जेंट का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। पहले आप थोड़े से पानी में बर्तनों को आप सारी गंदगी हटा दीजिए, पहले तो हाथ से गंदगी बटोर हटा दीजिए, फिर थोड़े पानी में बाकी गंदगी हटा दीजिए। अब गंदगी की मात्रा बहुत कम हो गई, अब आप जरा सा साबुन या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको लेके आप यूज कीजिए, और कम से कम पानी में वो चीज निकल जाएगा। उसमें भी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी नाली में मत बहाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब नाली में जाएगा तो वहां जाने के बाद वो बैक्टीरियल फंगल ये सब इन्फेक्शन होगा, मतलब कॉन्टेमिनेशन होगा, वो एसिड बनाएगा, और जो एसिड बनाएगा तो फिर प्रेसिपिटेशन होगा, फिर वो नाली जाम होगा। यथासंभव कोशिश कीजिए कि वो सारा कचरा को लेकर आप सॉलिड वेस्ट की तरह आप ट्रीटमेंट में ले जाइए। मैं 3 साल पहले एक लेक्चर सुन रहा था, भाभा एटॉमिक के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शरत, उन्होंने कहा था कि हम लोग चिल्लाते हैं सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, मोदी खराब है, ये खराब है, हेमंत सोरेन खराब है, सरकार बदल दो। मत सरकार बदलो, अपनी आदत बदलो। अरे इतना सा हम अपनी आदत नहीं बदल सकते हैं, इतना सा चायपत्ती, इतना सा सब्जी का छिलका हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। वो हम उम्मीद करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कोई अनपढ़ आदमी आए और हमारे लिए वो काम कर दे। हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? हम जितना भी ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट निकले हमारे पास से, उसको लेकर हम खाद बनाए। घर में झाड़ू पड़ता है रोज सुबह, इतना सा धूल निकलता होगा, उस धूल को लेकर हम उस सब्जी के छिलके वगैरह में हम मिला दें, उसको हम ढक दें, वो जल्दी से एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो जल्दी सड़ेगा।
सड़ने के बाद वो जल्दी मिट्टी बनेगा, तो उसमें थोड़ी और मिट्टी मिला दीजिए, उनको गमले में डालिए मिलाकर, वो खाद बन जाएगा। बाहर से आपको खाद खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सब कुछ आप खुद ही बना लिए हैं। फिर एक बात आती है छोटी सी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? ओके, सिर्फ हाथ उठा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू। फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तो पानी आधा ग्लास 1 ग्लास पानी बचाते हैं, इतना पानी फेंकते नहीं है, लेकिन टॉयलेट में जो फ्लश करते हैं तब तो इतना सारा पानी बर्बाद हो जाता है ना। हम 2 तरह का टॉयलेट यूज करते हैं, एक इंडियन स्टाइल, एक वेस्टर्न स्टाइल। दोनों के लिए, दोनों में ही हम आपको एक तरीका बता सकते हैं जिससे पानी को हम बचा सके। इंडियन स्टाइल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें एक 1.5 लीटर कैपेसिटी का एक मग ले लीजिए आप, और यूज करने के बाद उससे आप फ्लश कीजिए, सिर्फ 1.5 लीटर में आप देखिए वो पूरा फ्लश हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका टॉयलेट की बनावट ऐसी है कि 1.5 में नहीं हो रहा है, तब 2 लीटर का मग लीजिए, उससे हो जाएगा फ्लश। ऐसे 9 लीटर, 8 लीटर, 15 लीटर, उतना तो पानी नहीं बर्बाद होगा ना। मतलब आफ्टर एवरी यूज यू आर नॉट वेस्टिंग दैट मच ऑफ वाटर। ओके, इंडियन स्टाइल में। वेस्टर्न स्टाइल में तो आपकी मजबूरी है कि आपको फ्लश यूज करना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। इसके भी मैंने कुछ तस्वीरें दी हैं, आप देख लीजिएगा बाद में। उसमें अगर आपको लग रहा है कि पानी बहुत ज्यादा जा रहा है तो आप उसमें अंदाज कीजिए कि मान लीजिए ये उसका नॉब है, आप फ्लश कीजिए और जब लगे कि पानी तो पूरा जब तक खाली नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। जैसे ही आपको लगे कि हाँ पर्याप्त फ्लश हो चुका है, तब आप वहां से नॉब को ऊपर की ओर खींच दीजिए। मतलब आधा पानी गया और आधा पानी जाने से रुक गया, मतलब आपने रोक लिया, आपने उतना क्रेडिट कमा लिया है। आपने हमारे लिए, सबके लिए, धरती के लिए आपने उतना पानी बचा लिया है। मान लीजिए वो भी वैसा उपाय नहीं, ऐसे अब बटन दबाए और फ्लश हो गया, तब तो सारा पानी निकल गया। उसका भी एक उपाय है, उसका ढक्कन, आप सिस्टम का ढक्कन खोलिए और उसमें इस तरह के छोटे छोटे बच्चे 2, 3, 4, 5 जितने भी हटे, इस तरह के बोतल पानी से भर लीजिए और उसके सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। तो जब आप फ्लश कीजिएगा तो पानी तो जाएगा, लेकिन बोतल तो उस पाइप से नहीं जाएगा, बोतल तो उसी में रह जाएगा, है ना। मतलब जितना आपने ये कैपेसिटी को डाला है, समझिए कि उतना पानी आप हर बार फ्लश होने से बचा ले रहे हैं। छोटी छोटी बातें हर कदम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक जगह मैंने देखा था एक अपार्टमेंट में कि मतलब हर अपार्टमेंट में अपना अपना किचन होता है, हर अपने चाव से एक एक चीज, चटनी है तो पापड़ है तो ये है वो है, चावल दाल, मेरे तरह की सब्जी, ये सब हम लोग बनाते हैं और बना करके भोजन करते हैं। ओके, तो जितना भोजन बनाने के लिए उतना बर्तन, खाने के लिए उतना बर्तन, है ना। हमने एक जगह अपार्टमेंट में देखा था, लोग काफी समझदार थे। समझदार तो आप ही अपने अपने जगह पर, आप हम सब समझदार हैं, मैं भी, और बहुत चीज मैं कर पाता हूँ, बहुत चीज मैं नहीं भी कर पाता हूँ। उसके लिए पारिवारिक और सामाजिक बंधन है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी सोच उस दिशा में जानी चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर मिसेस मित्तल को सब लोगों ने कह दिया, अपार्टमेंट के उस फ्लोर के 5-6 परिवार वालों ने, मिसेस मित्तल आप तो दाल बहुत अच्छा बनाती है, ऐसा कीजिए ना, हम सब लोगों के लिए दाल आप बना दीजिए, और बस दाल ही बनाइए। और आलू पराठा, वो कोई दूसरी मिसेज थी दूसरे अपार्टमेंट में, आलू पराठा वो फटाफट और बहुत अच्छा बना लेती थी, तो वो कही मैं सबके लिए आलू पराठा बना दूंगी। आखिर 20 आदमी का परिवार को मैं संभालती थी ना, यहाँ तो सिर्फ हम लोग 2 इंसान हैं और 5 फ्लैट मिला के भी तो हम लोग 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का मैं आलू पराठा बना देती हूँ। एक ने सब्जी बना दिया, एक ने मटन बना दिया, और ये भरपूर उन लोगों का भोजन हो गया। अब सोचिए कि बर्तन पर होने वाला पानी का खर्च कितना बच गया। और यही नहीं बचा, आपने सिर्फ पानी बचाया ही नहीं हमारे लिए, आपने अपने लिए जो रिश्ते बनाए हैं, खुशहाली जो अपने परिवार के लिए आप लोगों ने जो खुशहाली लाई है, वो खुशहाली, मतलब money cannot buy that. When happiness comes like that, मतलब it's like that I have earned my happiness under my piece of sun, so that's absolutely satisfying. फिर इसके बाद सरकारों को भी बहुत सारी काम करने हैं, जैसे कि नदियों को जोड़ने वाला बिलासपुर, ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हम, मुझे लगता है कि मैं कम से कम 10 बार वो लेक्चर दिया होऊंगा, इसलिए अभी उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। सरकारों को अपना ये काम करना है कि देश की नदियों को आपस में जोड़ना है, ताकि बरसात का जो ये जो आज का
आज के संगोष्ठी का ये टॉपिक है, कैच द रेन। तो मतलब रेन को तो हम कैच करेंगे ही हम, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 73.6% बारिश जो है बरसात के 3.5 महीनों में होती है। और भाइयों और बहनों, उसका ज्यादातर पानी बाढ़ के रूप में आता है और फिर निकल जाता है, और अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेकर निकल जाता है। लेकिन हमें ऐसे में क्या, मतलब हमें एक देश के रूप में हमें क्या करना है, हमें उस बरसात के पानी को, कैच द रेन, उस बरसात के पानी को हमें रोकना है, ताकि बाकी जो 8.5 महीना सूखा पड़ा रहता है उस समय उस पानी का इस्तेमाल हो जाए। इसलिए सरकारों ने शुरू की ये बात इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर्स, और उसकी वजह से सूखे सूखे इलाकों में पानी जाना, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाना, और बाकी सब। इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ नुकसान भी होंगे हो सकता है, लेकिन उनको मीट करते हुए ये फायदे का हम आने वाले समय में लुत्फ उठाएंगे। बहुत सारे दूसरी समस्याएं भी होंगी, फिर पाकिस्तान प्रॉब्लम करेगा, बांग्लादेश प्रॉब्लम करेगा, चाइना खुश नहीं रहेगा। मतलब होता है ना कि एक पड़ोसी के घर में कोई नई गाड़ी आ गई तो सबसे पहले आप जलन के भाव से देखने लगते हैं कि भला उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अगर आपके दिल में संतोष है तो कोई आपके उस संतोष को डाइल्यूट नहीं कर सकता है। और छोटे छोटे लेसन हमें सीखने हैं, इवन चींटियों से। इसका भी एक चित्र मैंने दिया है, वहां पर एक पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी पड़ा हुआ है। अब बहुत सारी चींटियां आई पानी पीने के लिए, अब उस सारी चींटी एक तरफ उस पानी में लग जाए तो क्या होगा, पत्ता टिल्ट कर जाएगा और ये पानी नष्ट हो जाएगा। जैसे नाव पर होता है ना, बैठे हैं, अचानक किसी ने कह दिया वो देखो मछली, और सारे के सारे लोग नाव पर एक तरफ आ गए मछली देखने, और नाव पलट जाती है। तो उन चींटियों ने हमें वो लेसन दिया है कि नहीं, वो चारों दिशाओं में 3-3 कर 12 चींटियां हैं, वो 3-3 करके बट गई, और उसने ये हमें एक पाठ पढ़ाया कि हम लोग इस तरह रहे, पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को, संतुलन को देखते हुए हम जो भी काम है हमें वो करना है। ये इस पर लेक्चर मैंने कई और जगह भी दिए हैं, मुजफ्फरपुर में, बिलासपुर में, सिंदरी में, विद्यासागर, वहाँ पुरुलिया में, फिर रेडियो पर भी बहुत सारे हमारे टॉक्स हैं, वो सारे भी मैं कभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन हम लोग को मतलब पानी बचाने के अलावा रेन वाटर, अच्छा सरकारों ने तो ये हम लोगों के लिए आदेश दे दिया है कि आपको किसी भी हालत में बरसात का पानी को रोकना ही है। लेकिन बरसात का पानी रोकने के कुछ मतलब इफेक्टिव तरीके भी तो होने चाहिए। तो वो जो नॉर्मल रेन रिचार्ज पिट है वो सब आप कीजिए ही। मैंने भी अपने घर में किया है, 2003 में मैं गया था वेलोर किसी वजह से, तो वहाँ मैंने अखबारों में पढ़ा तमिलनाडु में तो पानी की बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत थी। तो वहाँ मैंने देखा क्या क्या तरीके अपनाए हैं। उसी वक्त मैं रांची में घर बना रहा था, उसके बाद मैं बनाना शुरू किया, तो मैंने भी वो सिस्टम को लगाया। और आज के दिन में भाई और बहनों, हमारे घर में जो भी कितनी भी तेज बारिश हो जाए, एक बूंद पानी बाहर नहीं निकलता और सारा उसी सोकपिट में जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि सड़कों पर भी जो पानी जम जाता है बहुत तेज बारिश में, वो सारा पानी मैं अपने ही सोकपिट में ले लेता हूँ। और लाखों लीटर पानी, मतलब 15-20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है, लाखों लीटर पानी उस सोकपिट में चला जाता है। और जब पानी अंदर चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है उससे। फिर इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, जैसे घर में चूहे नजर आते हैं, तो एक भी चूहा नजर आया तो आप क्या चाहते हैं, अल्ट्रा प्योर एनवायरनमेंट हो मेरे घर का, एक भी चूहा नजर नहीं आना चाहिए, मैं उन चूहों को मार दूंगा। एक भी चींटी नजर नहीं आनी चाहिए, मैं तुरंत हिट चला के उसे खत्म कर दूंगा। मत कीजिए, चींटियां हैं, वो चींटी मिट्टी में छेद करके अपना घर बनाती हैं, वो भी रह रही हैं, आप भी रहिए, आप अपने आप को बचा के रहिए चींटियों से। मतलब वो उपाय सोचिए, उनको अपना दुश्मन मत समझिए, वो आपके लिए दोस्त हैं। कैसे चूहे आपके दोस्त हैं, कैसे ये मिट्टी में छेद करते हैं। तो बरसात में जब बारिश होती है तो पानी कितना तेजी से, ऐसे हम कहते हैं ना, खुली मिट्टी नहीं है, कंक्रीट है, रोड है, पिच रोड है, पेवमेंट है, ढलाई किया हुआ है, पानी नहीं जा रहा है, तो अब वहां थोड़ा हम सॉफ्ट कर देते हैं, अब यहाँ पानी जाएगा। तो रिस्क के पानी तो धीरे धीरे जाएगा ना, जिसने आपके लिए चैनल बना दिया है, जैसे चींटी, चूहे, ये सब। तो आप कल्पना कर सकते हैं
कितनी तेज रफ्तार से पानी वहां जमीन के अंदर जा सकती है। और होने वाली बारिश जो है वो अगर उतनी तेजी से मिट्टी के अंदर न जाए तो क्या होगा, वो सतह पर बहेगी और बहने के साथ साथ अपने साथ साथ वो टॉप सॉइल को भी काटते हुए निकल जाती है। तो आपके मिट्टी में टॉप सॉइल का तो नुकसान हुआ ही हुआ। वो टॉप सॉइल जाकर के कहीं तालाब में घुसेगा, किसी नाला में घुसेगा, वहां जाके वो ये नाला मान लो इतना गहरा है, वो नाला छिछला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फलाना जी के खेत से आया हुआ मिट्टी यहाँ पर जमा हो गया है। तो ये भी तो नुकसान है। नाला वगैरह बनाना कितना खर्चीला प्रोसेस है। अब वो बार बार भर जाए, आप पाइप वाला नाला दिए हैं, वो जाम हो गया तो उसकी सफाई कैसे होगी? मान लीजिए वो नाली बना के उसको ढलाई करके उसको सील कवर किया हुआ है, तो हर बार जेसीबी लाकर तोड़ तोड़ करके निकालना और सफाई करना है ना। तो हमें इन सारी छोटी छोटी बातों पर जो हम कर सकते हैं उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और भाइयों और बहनों, हर कदम पर हमें ये सोचना चाहिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए, और कितना अपने मन को हम दौड़ाते हैं, लेकिन मन को मजबूत रखते हुए हमें ये सब काम करना चाहिए। बहुत सारे फल के पौधे हम लगाते हैं, आम, अमरूद वगैरह। बीच बीच में पपीते का भी पौधा लगाइए। पपीता का पौधा 1-2 साल में फल करके तीसरे साल में नष्ट हो जाता है। जब पपीता का पौधा मरता है तो आप देखते होंगे कि उसका तना जो है, जड़ कितना जल्दी सड़ जाता है, खोखला सुराख बन जाएगा। फिर बरसात में वही पानी को अपने अंदर धरती के अंदर समाविष्ट होने में ये किस तरह ये मदद करेगा, है ना। तो हर कदम पर भाइयों और बहनों, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा, एक दूसरी मीटिंग में जाना है। और मैं यही कहूँगा कि अपने मन को आप एकदम निश्चिंत रखिए कि कम से कम में अपनी जिंदगी चलानी है। बहुत ज्यादा लेके क्या होगा, बहुत खा के क्या होगा। अपने कैरियर में 35-34 साल हो गया मुझे, 35वां साल चल रहा है, और एक गाड़ी मैं लिया था, वही गाड़ी अभी मारुति 800 चल रही है, जो आराम से चल रही है। मैं धक्का नहीं मारता हूँ, धक्का मारूंगा तो फिर रिपेयर में ये होगा। सहज भाव से आप गाड़ी चलाइए। एक गाड़ी खरीदिए, लंबे समय तक चलाइए, क्योंकि एक गाड़ी को बनाने में भी, जैसे एक कपड़ा बनाने, 1 मीटर कपड़ा बनाने में 900 लीटर पानी लगता है, उस तरह एक गाड़ी भी बनाने में लाखों लाख लीटर पानी लग जाता है। तो जितना जल्दी जल्दी हम अपना लग्जरी शो को डिस्प्ले करेंगे, फ्लॉन्ट करेंगे, कोई इंप्रेस नहीं होने जा रहा है। आप अच्छी गाड़ी खरीदिए, अच्छी साड़ी पहनिए, कोई आपसे इंप्रेस नहीं होने जा रहा है। आपको असल खुशी तभी मिलेगी जब आप अंदर मन से खुश हैं। अंत में मैं एक बात यही कहूंगा मन के बारे में, मन ही मन को जानता, मन से मन का मीत, मन ही मनमानी करे, मन से मन की प्रीत, मन झूमा मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yeah. Thank you so much. So my screen is visible, I guess. Okay. Good afternoon to all of you. Thank you for inviting me to this particular program and asking me to deliver a lecture. The topic that I have choose to talk with you all or share my experiences on Himalayan cryosphere, an imperiled water tower and its future in a warming world. So when we say cryosphere, I guess you all know that what exactly is cryosphere. It stands for the snow and glacier covered area anywhere. That's what is cryosphere. Okay. So here there are two words. One is Himalayan, another is cryosphere. Okay, and third is water tower. That the Himalayan cryosphere is called as water tower. So
To start with the lecture, let me give a brief introduction about what exactly is Himalaya, what is cryosphere, and what are the different types of research problems associated with Himalayan cryosphere. So this is a geological map which I have extracted from Sierra M, which is on crustal melting, ductile flow, and deformation in mountain belts, cause and effect relationships from lithosphere. This is just a representation of the Himalayan geology. What exactly is Himalayan geology? So as you can see that Himalaya is enormous. How it is enormous? Because about 100 peaks exceeds 7,200 meter, or you can say 20,600 feet in elevation, which lies in the Himalayas. But if you look away from Himalaya, then in Andes, for example, the highest peak is only 6,961 meters. Okay, in Himalaya, there are hundreds of peaks which are above 7,200 meters. But away from Himalaya, if we look at Andes, the highest peak is only 6,961 meters. So that tells that how enormous is Himalaya. The second important point is that Himalaya is across the borders. It means it runs across 5 countries. If you talk about Hindu Kush Himalaya, so it runs across 8 countries, isn't it? If I talk only about the Himalaya or Karakoram Himalaya, then it crosses 5 countries, which are Bhutan, India, Nepal, China, and Pakistan. Among them, Bhutan and Nepal are completely Himalayan countries, or it is located at the Himalaya. The extension of Himalaya, if you look at the north and south extension of, east and west extension of Himalaya, so it is around 2,400 kilometers. Its east-west extension is 2,400 kilometers, and its western anchor here, it is the Nanga Parbat, and its eastern anchor is the Namcha Barua, where there are syntaxial bands. Syntaxial bands are there both at Nanga Parbat area as well as at Namcha Barua area. The width of Himalaya, it varies. Like towards the west, it is around 350 kilometers, and towards east, it is 150 kilometers. On an average, it's around 200 to 250 kilometers in wide. Okay, north-south extension or south-north extension. So how Himalaya evolved? So it can be explained using this small animation. So Himalaya evolved because of the movement of Indian plate towards the Eurasian plate. So how it was formed? It formed as a result of a continental collision or orogeny along the convergent boundary, which is the main Himalayan thrust between the Indo-Australian plate. So this one is the Indo-Australian plate, and the Eurasian plate. This one is the Eurasian plate. So when this both continental collision took place between the Indo-Australian plate and Eurasian plate, here the Himalaya formed, which is a folded mountain belt. Okay. So when it happened during the Upper Cretaceous, which is around 70 million years ago. And why it happened? Because of the Indo-Australian plate, which was subsequently broken into the Indian plate and the Australian plate, was moving at around 15 centimeter per year. So during Upper Cretaceous, around 70 million years ago, it was moving at 15 centimeter speed, isn't it? So the Indian plate is still moving, but its velocity is quite less now. It is around 67 millimeter per year, out of which 20 millimeter per year, it is absorbed where? It is absorbed along the thrust system. So like there are 3 thrust systems, the point where the Eurasian plate and Indian plate join, it is called as Indus-Satpur suture zone, along which Brahmaputra river as well as Indus river flows. Then we have the main central thrust, then we have main boundary thrust, and the youngest one is the HFT, Himalayan frontal thrust. So there are 3 thrust systems. Along this thrust system, around 20 millimeter per year of this particular movement of Indian plate is absorbed. Then 5 millimeter per year Himalaya rises because of this 67 millimeter movement of the plate. So due to this collision and shortening of the crust, so it moves upside around 5 millimeter per year. So because of that, Himalaya is extremely active, and therefore you will see lots of activities taking place in Himalaya. For example, lots of erosions are taking place, landslides are taking place, river erosions are very much active, isn't it? So all these things are happening because of this active tectonics which is taking place in Himalaya. Himalaya is also important since I'm going to discuss about the water tower. So Himalaya is also important in one way that it gives rise to major river systems. Among them in India, there are 3 major river systems which dominates the Himalayan as well as in the Indo-Gangetic and Brahmaputra plain. And these 3 major river systems are Indus, Ganga, and Sangpo and Brahmaputra. Like Sangpo is called in Tibet and Brahmaputra in Indian region. So combiningly, the drainage basin is home to some 600 million peoples.
and out of which around 53 million people live in the Himalayas. So that tells about the importance of these three river systems, that if we are talking about these three river systems, or if we are studying this three river system or taking any decision on three river system, it is basically influencing the life of 600 million people who are directly or indirectly related to this particular drainage system, and 53 million people who are actually living in the Himalayas. Okay. So after talking about the Himalayas, the next question comes that what are the major issues or questions related to Himalayan glacier, which we call it as water tower. Why we call it as water tower? Because if you look at Antarctic and Arctic, these are the two major regions where most of the fresh waters are locked. So apart from that, major amount of fresh water are locked in the Himalayan system also, basically in the Hindu Kush Himalaya. And if I talk about Indian region or these 5 countries, then the Indian Himalaya. So majority of the water is stored in this Himalayan system, and therefore it is called as the third tower, okay, water tower or third pole, where the fresh waters are stored. So there are some major questions or issues which are to be addressed related to Himalayan glaciers and cryosphere, and these are: what is the total snow-covered area? How much snow-covered area is there in Himalaya? And the snow-covered area could be permanent snow-covered area or seasonal snow-covered area. It means after the complete melt season is over, how much snow-covered area is left, and when snowfall takes place, how much area is covered by snow. So both these things are important for us to know. Why? Because that will help us in finding out the total amount of melt which is contributed by snow cover. Second question is, what is the total snow water equivalent seasonally and annually? What exactly snow water equivalent lies here? The density of snow is around 400 gram per meter cube. And if we look at the density of ice, it goes up to 900. So we need to find out the snow water equivalent. It means if 1 meter cube of snow melts, how much water it will contribute. Okay. So we also need to know the total snow water equivalent seasonally and annually. Third question is snow melt runoff modeling and discharge estimation or forecasting under changing climatic scenario. Because we need to know that if today we are getting this much of discharge from snow covered area, how much discharge we'll be getting in future under the changing climatic scenario. So this is another question. Then there is one more question. What is the status of Himalayan glaciers and glacial lakes, and what are the associated dynamics? So there are so many inventories of glaciers and glacial lakes. For example, inventory by SAC Ahmedabad, inventory by Geological Survey of India, inventory by ICIMOD, and recently Randolph Glacier Inventory. I'm part of that particular committee. So RGI, we are preparing the inventory of complete glaciers all over the world, as well as glacial lakes. So there are so many different types of inventories, but we need to do certain correction in all of these inventories depending on our requirement. Okay. So next comes glacier mass balance estimation in basin and regional scale. We also need to know about the glacier mass balance. It means how much amount of snow accumulates in a glacier, how much amount of snow melts from a glacier, and what is the balance. Okay. So accumulation minus ablation, how much balance is there in these glaciers? That also we need to know. Glacier ice thickness. What is the thickness of the glacier ice? Because if we know the thickness of the glacier ice, we can talk about the total amount of stored water in all those glaciers. That also we can talk about. Mapping the future extent of glacial lakes, both in space and time domain. Glacial lake outburst flood modeling under different scenario. For example, you have heard about the Kedarnath incidents. You might have heard about the Rainy Village incidents which took place in 2021. So that was one of the incidents where many people lost their lives. So we also need to know about the glacial lake outburst flood. We need to model it in different climatic scenarios or different topographic scenarios. Standardization of the methods. It not exactly talk about the freezing the methodology, but it brings about it talks about bringing a commonality. Why we need to do standardization of the methods? Because maybe there are so many people who are working on Himalayan glacier inventories or glacial lake inventories or mass balance estimation using different types of satellite images. But end of the day, if all our standards are different, okay, suppose our projection systems are different or our corrections that we are applying are different, so what will happen? That there will be no coherence. People can't work together, or we can't share our data, or it won't be usable, and therefore we need to do certain standardization of the method so that people can there is some amount of commonality. So these are few of the major research questions which I'll be addressing in my lecture.
So these are such type of research questions that any one of you, whoever are interested for research, you can pick up any of the topic and it will help you in your future. So you can dive inside and then you can find out the solution to different types of problems. So this is one satellite image of Everest Base Camp on Khumbu Glacier from 2017 to 2018. So here you can see 2018 is the year, then month, and then day. Okay, so it shows that how glacier is changing in Everest Base Camp on Khumbu Glacier from 2017 to 18. So it tells about the cyclicity of glaciers, okay, cyclicity of snow-covered area or glaciers. Similarly, this is a glacier surge of this is an animation of the Baltoro Glacier, which is around 63 kilometers in length, and this is one of the longest glacier. It's not the longest glacier, one of the longest glacier. It is located in Gilgit, Pakistan, and its surrounding tributaries are also shown here. So it shows how exactly the glacier is moving and how exactly it is changing with time. Okay. Similarly, this is an animation. This I have picked from Twitter. It was posted by Matthias Haas. He's a very famous glaciologist or cryosphere scientist. So here he has shown the past and future retreat of a glacier in Switzerland, and according to a medium greenhouse gas emission scenario. So how these glacier will retreat. So here you can see that it has gone up to how much years? 2099. So this is a simulation. He has shown a simulation. So after 2020, massive measures to produce artificial snow are implemented. It slightly slows melting, but by far does not stop it. So after 2020, due to some measures which were taken to produce artificial snow, since these implementations were done, so although it has reduced the pace of melting, but it didn't completely stop the melting process. So now, till now what we have talked about is, first is what is Himalaya, how it evolved, what is the enormity of Himalaya, and why it is important. Second, I have talked about the importance of cryosphere and glaciated area, and what are the major research questions in front of all the researchers which we need to address. So topic wise, I have elaborated that thing also. I've shown you a few of the satellite images. Now the fourth thing is to know about the importance of these Himalayan river system. So if you look at India, India is dissected by 20 river basins. Among them, 12 are major river basins and 8 are medium and small river basins. And the total water resource potential of all these basins is around 1,869 billion meter cube, okay, BCM. So out of this average annual water resource potential of 1,869 BCM, Brahmaputra and Barak River, okay, so Barak River is a tributary of Brahmaputra. So this Brahmaputra and Barak River of Northeast India, they account for 586 BCM, which is roughly 32% of the total water potential. So you can see here also. So where exactly the Brahmaputra annual per capita water availability of Brahmaputra lies, then Meghna, Narmada, and the rest of the rivers. Since 1/3 of the water wealth of the country is concentrated in the region popularly called the Water Tower of India, which is Northeast India, with only 2.6% of the total population of the country and 7.9% of the total land area of the country. Okay, so therefore there is surplus water in Northeast India in the river system. So the region has per capita water availability of more than 13,000 meter cube, which is well above the 1,700 meter cube per capita threshold, which is defined by Falk and Moag. And it is also well above the national average of 1,544 meter cube per capita per year, although it has changed. So there are different types of figures that I'll be showing, but they are of different time period. Now, India also ranks 5th in terms of exploitable hydropower potential on global scenario. So the exploitable hydropower potential of India if we look at, so India ranks 5th as per the assessment of CEM. So then India is endowed with economically exploitable hydropower potential to the tune of 1,48,700 MW of installed capacity, megawatt of installed capacity. 56 number of pump storage projects have also been identified with a probable installed capacity of 94,000 megawatt. Hydro potential from small, mini, and micro schemes has been estimated as 6,782 megawatt from 1512 sites. Thus, in totality, India is endowed with hydropower potential of around 250,000 megawatt. Okay. If we look at the different river basins, so Indus Basin, it has around 33,832 megawatt, okay, installed capacity, probable installed capacity. Ganga Basin, 20,000.
Then Central Indian river system 4,152. Western flowing rivers of South India 9,430. If you look at Brahmaputra, it has got 66,065 megawatt of probable installed capacity. That tells about the enormity. If I look at the present scenario, so presently India ranks 8th in terms of installed capacity, the capacity which is generated. So it ranks 8th. So still it is in top 10 countries in terms of capacity. Tajikistan being one, which is in the Hindu Kush Himalayan region. Then comes Canada, then US, Brazil, China, Russia, Norway, Japan, and then India, and then comes France. So this is a table of installed capacity of India, which is 36,878 megawatt. State-wise, how it is distributed. This is the potential projects installed and projects under implementation. Now, let's see the different river systems of the Himalayan system, okay, which also includes Hindu Kush river system also. Okay, so you would see that these are the three river systems: Indus, Ganges, and Brahmaputra, which runs through India, and these are more important for India. In terms of area, Indus river system is largest, okay, in terms of catchment area or the basin area. Then comes Ganga, then comes Brahmaputra. However, if we look at mean discharge, Brahmaputra far exceeds Ganga and Indus combining together. If we are interested to find about the water resource of Indus, then we will have to note down that 44.8% of the water or melt in river system in Indus River comes from glaciers, then 12.3% in Brahmaputra and 9.1% in Ganga. If we look at population, so this is a distribution of population. So Ganga is more water, like Ganga is lifeline to more population. Okay, multiplied by 1,000. So around this much of population is there in Ganga, which depends on the Ganga river water. Population density you could see. So this is the population density. So highest is in Ganga, followed by Brahmaputra. Then comes the Indus. Water availability per person per meter cube per year. It comes that water availability is maximum in Brahmaputra, followed by Ganges, and then comes Indus. Away from the Indian system, if we look at Irrawaddy river system, which is in Myanmar, so you could see that it's also very big river system with lots of discharge, okay, and there is lots of water availability. Water availability is highest in Irrawaddy river system, then Mekong also. Okay. Country-wise, this is per capita water availability in 2000 and 2005. So here you would see that in India, we are under two river systems. One is Ganga, Brahmaputra, and Meghna water system, and another is Indus river system. Okay, so total population and then per capita water availability in totality is 1,880, and per capita water availability in 2005 it has reduced to 1,750. This was in 2000. This is in 2005. Now, if we look at the factors which leads to cross-border water-related conflict, as I said that in case of Himalaya, it is across 5 countries, isn't it? Not Hindu Kush Himalaya, but this is the Himalayan part: India, China, Pakistan, Nepal, and Bangladesh, Bhutan. These are the 5 countries where Himalaya, which are located on the Himalaya. Okay, so here there is a cross-border water-related conflict. So why this cross-border border water-related conflict? So some of the critical indicators of vulnerability to conflict among nations related to water availability are per capita water availability, level of water withdrawals for annual use in relation to its availability. So here I have shown the per capita water availability. Second is level of water withdrawals for annual use in relation to its availability, that I'll show in next table. Third is the extent of dependence on water resources that flow in from the borders. This I'll show in the 4th table. So here comes the 3rd and 4th table. So this table shows our water withdrawals as a percentage of renewable supply. Okay, how much renewable supply is there? What is the percentage of water withdrawal? So here you would see that India, it is around 34%, which is quite high. It is quite high. And dependency on imported surface water. Imported surface water means where the water is coming from cross boundary, okay, from other country. So here India, the dependence on imported surface water is 34%. Why? Because majority of the water is coming from the Nepal side also. There is some amount of water which is coming from Bhutan side also. And there is some amount of water which is coming from Tibet side also. So India depends on Nepal, Bhutan, and Tibet in terms of imported surface water, or its water is shared between these 3 countries or 3 regions. Okay.
Then comes Bangladesh, 91%, and 76% Pakistan. So in Bangladesh, all the water, okay, almost all the water comes from, majority of the water comes from the Indian territory. Therefore, they completely depend on India in terms of water sharing. Similarly, Pakistan also completely depends or majorly depends on India for the water sharing, because Indus River system, it comes from the Indian side to, it goes to Pakistan side. Okay, so these tells about the different types of relations or water distribution in India as well as adjoining area in terms of Himalaya. Okay, now let's come to the electricity part. Sorry, water availability part. So this is the per capita water availability. Then comes the census. Okay, the census from 1951 to 2050. You could see what is the absolute population, what is decadal percent change in population, per capita water availability, and decadal percent change in per capita water availability. So if we concentrate here, per capita water availability in 1951 was 5,177. So we were water surplus. By 2011, it was 1598, still in okay condition. But now, as we are approaching towards 2030, it will be 1341 projected. And by 2050, it is projected or estimated to be 1140. So we are going to be in a water stress condition. Okay. From water scarce to we're going towards water stress condition. And this tells that how much per capita percent change in per capita water availability is taking place in these places. Okay. So here comes your population growth per capita, net availability of food grain, and per capita water availability in India in different years. So this is projected for 2025, this is projected for 2050, and this is by Ministry of Agriculture, Government of India, 2007. So here the same figures, 5177, it goes up to 1140. So you are going towards the water stress. So what is water stress index by Fockenmark? So water stress indicates that it's based on the minimum per capita water required for basic household needs and to maintain good health. The region whose renewable fresh water availability is below 1,700 meter cube per capita per annum is a water stress region. And those area where it falls below 1,000 meter cube per capita per annum is called as water scarcity. So till now it was above 1700. So we were quite near to water stress. Now we are water stress. Okay, now we are water stress. By 2050, we will be approaching towards water scarcity, and this is alarming if it takes place. Okay, so here it shows the energy income and energy consumption per capita. Here you could see that per capita income in 2001 was 16729 and energy consumption was 98. If you look at up to 2007, it was 27,776 and per capita energy consumption increased to 168. Now, if you look at today's scenario, okay, it was 2007. So if you look at today's scenario, it's much higher. It's much higher. Okay? The growth is exponential. So again comes the major question. So now the scenario is quite clear to you that where exactly we are standing and what exactly the problems are. So let's address these research questions one by one. To start with, I'll start with one particular event which is called as Kedarnath disaster of 2023. You might have heard about the Kedarnath disaster of 2023. So Kedarnath is a small religious place where Shiva temple is located, and we need to track it. Okay, it's around 16 to 20 kilometers in length, depending on which track we are following. So while going to Kedarnath, there is one small township which is called as Rambada. So this is a small township which is called as Rambada, midway between Kedarnath and the first point where you can stop from a vehicle. So where from the trek starts. So people used to stay here, and around 5,000 to 10,000 people can accommodate here, depending on how many rooms they are sharing with how many people. If you look at the image, okay, this is a picture which I took after the disaster. There was no trace of this particular township here. It was completely gone. Not even a single piece was left here. So you could see that how big the disaster was. This is a Kedarnath temple which was actually buried up to its platform. Till its platform, it was completely buried by the debris which was carried by the glacial lake outburst flood.
So Kedarnath is a height located at a height of 3,583 meters. This is Google Earth image, and around 223 kilometers from Rishikesh on the shores of Mandakini River, a tributary of Ganga. So this was the first image. At that time I was working with IRS. So this was the first image that we could produce using list4 image as well as Cartosat DEM to give it to the rescue operators like NDMA, NDRF, then Indian Army, Indian Air Force. They wanted to see, because no one could go there, that what was the damage, what was the extent of damage. So this was the first 3D view or the bird's eye view of the Kedarnath temple township after the disaster which took place. This is the lake which I have picked from a file photograph from Google. The lake area before breach was around 3.4 to 3.6 hectares with a length of 320 meters and width of around 160 meters. And this is the lake which we surveyed after the disaster. So this is me and this is my friend Praveen Thakur from IRS. So we went there to do the survey. These are few of the locations where helicopter crash took place. So whichever helicopter went there for the rescue operations, among them, some 1 or 2 helicopters also crashed, killing the pilot as well as other people. So these are few of the locations that we 3D view we have created for the rescue operation. These are few of the helicopters you could see which are damaged. This is the bridge. The banks are completely eroded. Such type of scenarios were quite easily visible there at that time, but now the complete scenario is different. If you go now, it's renovated and things are in quite well placed now. It's quite safe to be there. Okay. So why that thing happened? So it could be because of heavy rainfall which took place, because Dehradun itself recorded 595 millimeter of rainfall in 48 hours, which is attributed to 2 rare events. Okay. Like because of the westerlies and southwest monsoon which came together, and because of which higher amount of rainfall took place. This extreme event was not only intense but also extensive, as almost 5 districts of Uttarakhand were affected. Chorabari Tal, which is located around 2 kilometers from the Kedarnath temple, upstream of Kedarnath temple, there breaching took place for around 62 to 64 meters in a V-shaped, indicating overtopping followed by deep incision. It means first the lake was there, water overtopped, and then there was deep incision, cutting was there. And the cutting was around 62 to 64 meters. I'll show you the pictures also. Water level in the lake, it has risen approximately 20 meters. So in this lake, the water level was around 20 meters. Lake area before breach was around 3.4 to 3.6 hectares with length of 320 meters and width of 160 meters. And total volume of water is estimated to be 7.1 into 10 to the power 5 meter cube. I want you to remember few of these figures, like what is the total amount of water, what is the size of the lake, okay? Because I'll discuss it in the next few slides. So this is what we have done. We have done the GPS survey. We could calculate the height difference of around 20 to 40 meters. Somewhere it was 20 meters, somewhere it was 40 meters. Average was around 20 meters. Total volume of water is estimated to be 0.71 to 0.72 million meter cube. Average discharge was around 1,192 meter cube per second. How we have considered or calculated this one? We calculated this one based on our field survey and interview of few of the people who were there. They told that the lake emptied in 5 to 10 minutes. The peak discharge was estimated as 5376 meter cube per second by using dam break formula, which was given by Hunger et al. And referred by Rickenman using this particular formula. Okay. This is the incision that I was telling you, 62 meters. This is one of my students who is now doing PhD here at Civil Engineering Department. So the breach was around 62 to 64 meters. From here, the water started leaking out or moving out. So considering the valley width at Kedarnath town around 320 meters, average water column height is estimated to be around 3.7 meter for a duration to 10 minutes. So in 10 minutes, if we calculate where, because we know the valley width, what is the valley width of Kedarnath town? So if the water has moved within 10 minutes, it has the discharge took place. So the height of water column was around 3.7 meters. You just multiply it by 3, okay? So how much it will be? It is going to be close to around 9 to 10 feet. Okay? Average height of human being is 5.5 feet, means twice the height of human being. That much of water was there in the township. So this particular Kedarnath disaster could be well connected with another disaster, not disaster, but another thing which took place. It's called as the Gohna Tal 1894. Okay, it's more than 100 years apart. So this is the Google image of Gohna Tal area. So it can be compared with the Gohna Tal devastation. So this is a spectacular lake which was created when a huge rockfall
from the right bank of Birahi Ganga River, which is a tributary of Alaknanda River, blocked the river in September 1893. 1893 means pre-independence era, okay, during the Britishers' time. So this is the place where Gohnatal was there. Okay, so breaching took place on 25 August 1894, which caused widespread inundation in the downstream. This is in Birahi Ganga tributary of Alaknanda. This is the Gohnatal area. This is lake deposit now. Okay, this part is lake deposit, and landslide took place from this particular area. Okay, here, blocking this one. So yeah, I'll show the pictures again. On 6 September 1893, two landslides took place on right bank of Birahi Ganga, and the side of a steep hill measuring some 1300 meters above the level of stream crushed down into the valley, and it was mostly limestone terrain, and it formed a dam of more than 3 kilometers wide at the base and 600 meters at the top. Okay? So you could imagine 3 kilometers wide at the base and 600 meters, okay, that much big. Height of the lake was 270 meters initially, and the total rock volume was estimated to be around 150 to 200 million meter cube. This is the scar from where landslide took place, and this is landslide material. If you can see my cursor, this is the landslide material. So it blocked up to here, so you could see the height. And this is the lake deposit now, because the lake is gone, so this is the lake deposit. This is file photograph of 1894, and this is the present day photograph of 2006. In December 1893, the area of the lake was around 2.5 square kilometers and its depth was around 145 meters. By July 1894, the lake had become nearly 6 kilometers long and 800 meters broad. If you compare with the Chorabari Tal, 320 meters, isn't it? 320 meters, and here it is 6 kilometers long. Water level was how much? 20 to 30 meters, and here how much water level? It goes up to 270 to 400 meters. Okay, just imagine the enormity. And the level of water has risen nearly 55 meters to total level of around 200 meters. The first breach occurred on 11:30 night on 25 August 1894. At that time, the lake volume was 470 million meter cube before the first breach on 25 August 1894. During breach, 283 million meter cube of water was released, but still there was 187 million meter cube of water was left. And what is the size of Chorabari Tal? 0.7 million meter cube. 0.7 and 283. Just compare the size of the lake. Okay. During August 1894, the drawdown from the lake was 119 meters, which happened over a period of 4.5 hours, equivalent to average discharge of 17,479 meter cube per second. So the anticipated flood level was marked by a masonry pillars, which was constructed. So these are few of the things which those people, the Britishers did at that time, that they created some masonry pillars at half a mile interval along the Birahi and Alaknanda Valley where the water will flow. And these masonry pillars were created 60 meters above ordinary flood level. This is water level. This is ordinary flood level. 60 meters from ordinary flood level, they created the masonry pillars. Okay. 8 suspension bridges were removed between Chamoli and Haridwar. And along the pilgrim road to Badrinath shrine, diversions were constructed to minimize the impact of disaster. A lieutenant was posted here. His name is Lieutenant Cruikshank, and he was given a telegraphic cable connection. So for the first time, telegraphic cable connection was established and used for emergency communication, which tells us that for disaster preparedness, you should use all the best technologies, whatever is available at that particular moment, so that you can save more life, if not the property. The first sign of breach was sounded by the heralding of the sound of bells. Then there was a warning which was communicated by telegraphic message, bonfire, rocket, beating of drums. The floodwater hit Srinagar. This is not Kashmir Srinagar, but this is Garhwal Srinagar, which is just above Rishikesh, okay? Some 100 kilometers above Rishikesh. So the floodwater hit Srinagar 116 kilometers downstream in 4 hours with a speed of 8 meters per second. Why? Because there was lots of debris also with the water. There were some 2,000 people living at that time in Srinagar, although none of them died, but there was huge disaster in terms of property, like Palace of the King was destroyed, police station was destroyed, Dak Bungalow, which is your tourist rest house, all were destroyed completely. This is in different places, like when you start from Birahi Ganga area, the major townships are Chamoli, where flood level was 49 meters, Rudraprayag 43 meters, Karnprayag 40 meters, Nandaprayag 34 meters, Srinagar 13 meters, Haridwar 03 meters. Wherever this word Prayag comes, these terms are used when
two tributaries meet together and then finally makes Ganga. Ganga starts from where? Although it starts from Gangotri in terms of Bhagirathi, but the river named Ganga, it starts from Devprayag, where Alaknanda and Bhagirathi merges together. Okay, so similarly, there is Nanprayag, Karnprayag, and Rudraprayag, where different tributaries meet each other. The success level was at that time, although there was around 95,000 property was damaged, and if you add inflation, it will go to multiple crores. But only 5 people died, and they could save all other people. And why these 5 people died? They also died only because of one reason, that they refused to move out of the danger zone, because they thought that our cattle are there, our houses are there, we are not going to move out, and therefore they died. Rest all were alive. So this is the first breaching took place on 25 August 1894. Second breaching took place in 1924, and third breaching took place in 1970, which also coincides with the Great Alaknanda flood, which is called as Belakuchi tragedy of 1970, which took place due to heavy and continuous precipitation for several days prior to 20 July 1970, and then finally the Gonatal lake was gone. Nothing was left after that. Okay. So after that, the Gonatal tragedy was gone and was, yeah, and after that, there was no more Gonatal, rather there was only lake deposit. So I have some another, I think, close to 60 slides to show different types of works of different, different research questions that I have discussed till now. But I think it's close to 2 p.m. So students might be hungry. At the same time, I have few meeting also. So should I stop here, or you want me to continue? Okay, so yeah, very crudely, I'll tell a little bit and then I can conclude. So then what we have done, first I have shown about the two tragedies related to water. Then what we have done here is we have also tried to study the snow covered area in Himalaya in different regions, Karakoram Himalaya. So we have tried to find out that how snow covered has varied in these regions. For example, in Karakoram area, Western Himalaya, Central Himalaya, and Eastern Himalaya. So the glacier map was extracted from RGI boundary 6.0. Now 6.5 is also, I think, almost ready. So you could see the distribution of glaciers in all those different regions. So we have used this much of data sets, which include Modi's data set, GLIDAS, which is a reanalysis data, ERA5 blend, reanalysis data, Landsat OLI, and station data. And these are few of the trends that we could see. So what we have done here, just to conclude in short, we have snow-covered area, or we have glaciated area. We try to find out that how the snow-covered area as well as glaciated area has changed in so many years. What is the trend? And what are the energy balance components which are influencing? For example, whether it is because of increase in net short wave, net long wave, or it is because of RH, or it is because of PT, or it is because of latent heat, or it is because of any other factor. So we try to find out the component or parameters which are influencing the snow-covered area, which has influenced the snow-covered area. So this is one of the work that we have done. You can go through our paper, this one, which is published in Hydrological Science Journal already. So you can get to know about this. Random glacier inventory, you can go through the random glacier inventory. We have tried to contribute here. So I am one of the member here, working group member. And one of my students is also member here, so he's also contributing. So you can go through end of glacier inventory if you want to work on glaciers. This is the glacier inventory and temporal assessment of glaciers in Uttarakhand that we have done, how it has varied in so many years, in last 48 years. Like initially it was 60, and now it is around 130 if we can map it at 150,000 scale. Similarly, we have mapped for Arunachal also, how glacial lakes have changed in Arunachal in so many years, in last 40 years. This is for the Jammu and Kashmir and Ladakh area, how many glacial lakes are there and how they are changing. This is for the Sikkim area. Similarly, we have developed a new model for glacier mass balance. So why glacier mass balance is important? Because if we are studying glacier length or we are studying glacier area change, it will not give, it will it shows an indirect and delayed response to climate change depending upon specific glacier's response time. And therefore, glacier length or glacier area change is not
it gives information, but it's not a very good information that we are getting. On the contrary, if we are studying glacier mass balance, it is undelayed, unfiltered, and direct method of finding out the health of glacier or influence of climate change on glacier. Okay, so when it was first studied, glacier mass balance was first studied by S.W. Hellman, who in the Nordic countries, he's a Swedish glaciologist, in 1920s to 1930s. In India, it was started by the Geological Survey of India in 1974. They started studying Gara Glacier in Himachal Pradesh. Okay. So, yeah. So we have done the glacier mass balance study for few of the glaciers with NCPOR. So I think, yeah, you can go through our paper on this thing. Estimation of mass and energy balance of glaciers using distributed energy balance model over the Chandra River Basin, Western Himalaya, which talks about the new model, which is completely remote sensing based with few field verification, which you can use in basinal scale. Okay, in basinal scale, you can do the mass balance studies. So since we are out of time and I have another meeting scheduled, so I'm stopping here. But however, yeah, I'll share my slides. You can go through my slides. You can go through all the different types of works that we have done. And if you have any question, you can get back to me. So I'll be happy to talk to you all. So I'm sorry, I'm concluding here, but thank you so much. Thank you so much. I'm sorry that I couldn't complete my presentation because of lack of time, but I hope that I have at least expressed the view on this World Water Day, and I could tell about what exactly is happening here in Himalaya. Thank you so much. सर नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर दीपक जादुरिया बोल रहा हूँ गंगटोक से, सिक्किम से। तो सर मेरा लेक्चर अब इसके बाद होगा या कंटिन्यू रखें सर, क्या करना है? ओके सर, 2:30 सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, नमस्कार सर, नमस्कार।